किसकी आवाज खड़खड़ा रही है? रुके दे रहा हूँ। बच्चे हैं सब। अरे ये कौन स्ट्रीम है? यार्ड जो भेजा यही है। इरिटेटिंग। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? अरे यूट्यूब पर लाइव है क्या ये? हाँ यूट्यूब पे लाइव है। अरे मैं पूछ रहा हूँ यूट्यूब पर। यस अरे यस। अभी मत करो यार, अभी इसमें मत करो। अबे तुम क्या हो, होने दो ना, उससे क्या जा रहा है, डिलीट मार दूंगा वीडियो। एक दिन को स्टार्ट तो करने। अबे तो वो डिलीट हो जाता है भाई, तुम बोलो ना जो तुमको बोलना है। अच्छा ठीक है। वो तो क्या, वो सब तो एडिटिंग का काम है। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई मेरे को बस इतना बोलना है कि आइए मोरल आइए रियलिज्म डज स्ट्रीम नॉट यार्ड, रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यही बस ऐप है। यही मेरा सेंटेंस है बस। What is this? ओके, रैशनल रेलम कहाँ है? अरे ये रैशनल रिज्म को ऐड करो भाई। तो ये अरे आएगा ऐड तब। करो, ये बैक स्टेज पर है रैशनल रिज्म। इसको मैसेज करो कब आए। जेन को मतलब अरे ऐड आ क्या गया। करो, इसको बोलो लिंक पे आए ना, हेलो। लिंक आ गया। आ गया आ गया हाँ आ गया बे। अरे मेरे को, अरे चैनल का नाम क्या है? चैनल मैंने का नाम लिंक क्या है? भेजा है, इंस्टा ग्रुप पे देखो, लिंक भेजा है। भागवत वैनगार्ड करके है, ओरिएंटल थीस करके भी नाम है मेन। अरे उससे इंस्टा खुल रहा है। वो इंस्टा जो के लिंक है उससे इंस्टा खुल रहा है, यूट्यूब नहीं खुल नहीं, यूट्यूब ही खोल रहा है, गलत तुम तब फिर देख रहे हो। कोई और खोल के देखो, पता चलेगा। रहा। अभी मेरे एक सेकंड भाई, मेरे से इंस्टा खुल रहा है। तो एक बार फिर से कर लो। एक तो भाई इंटरनेट का मेरे भी दिक्कत है थोड़ा सा। एक सेकंड। चेक इट चेक इट। खुला यूट्यूब, यूट्यूब तो लाइव भाई मेरे में चल रहा है, मुझे दिख रहा है क्लियरली। कोई भी बता दो, कोई भी देख के बता दो एक बार। हाँ तुम्हारा लाइव तो हो रहा है, मुझे दिख रहा है। यस थैंक्स। ठीक है, डिबेट करो फिर, छोड़ो। अरे डिबेट थोड़ी करनी थी उसको, जेन को कुछ कहना था। अच्छा बोलो। मेरी आवाज आ रही है? जेन को कहना हम्म। तुम्हारी लाइव हो रही था। है? जेन भाई। हाँ हाँ, रेस्टोरेंट में आ रही तुम्हारी आवाज। हेलो भैया, देख रहे हैं? आ गए। हेलो जेन। चलिए ठीक है भैया, चलिए सीताराम जेन ना। की वॉइस आ रही है क्या किसी को? ये मुझे नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जैन की आवाज तो नहीं आ रही, तुम दोनों की आ रही है। हेलो। ओके। ये टेम्पलेट थोड़ा सा रुको, मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, डज मोरालिटी नीड, अरे यार ये तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो जो सब सस्ते सस्ते यूट्यूबर्स नहीं होते हैं, जैसे लाइव करते हैं वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। ओ भाई, टैप। हेलो बोलो, तुम लोग क्या कर रहे हो तब? हम बोलते रहते, कुछ डिस्कस करते रहते। हाँ हाँ, रैशनल रैम बताइए फिर, आपका क्या विचार है दुनिया पे? तुम अरे बताओ पहले। अच्छा ठीक है, ओकेजनल मीट ईटिंग पे ये बात हो हाय रही कौन थी। है? एक ओकेजनल। सेकंड। ये हाय कौन है? ये स्टूडियो चैट में हाय कौन है? ये को किसको कह रहा है ये? हाय हाय कौन है ये? हाय ने ये डांस वाला ही मूवी देखा है। अबे छोड़ो, फॉरगेट अरे इट। ये वो होगा आरव है। सुनो सुनो सुनो। आरव होगा भाई। हाँ तो मैं कह रहा हूँ हम्म। ओकेजनल मीट ईटिंग में इसलिए भी इशू नहीं है कि दैट
फर्स्टली यू आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, सेकंड इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि मार्केट डिमांड इज नॉट अर्जेंट डिमांड, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ये आर्गुमेंट यूज हो सकता है कि दैट इज एक्सपेक्टेड सप्लाई, कि उसे पता है कि उसे इतना ही करना है, ठीक है। तो इट्स अ सोशल बिहेवियर, कि लाइक वो अपना नंबर एक या दो लोगों के लिए नहीं कर रहा है, कि लाइक जैसे पड़ोसी होता है। अब तुम मान लो कल को पड़ोसी के यहाँ जाओ, ठीक। अब अचानक से तुम पहुंचे, अब उसको सपना आया था कि तुम कल आओगे और तुम उससे वो लोगे, मतलब जो भी उसका बकरा या जो भी है, एंड उसने वो काट के तुम्हें दे दिया, ठीक है। अब यहाँ ये पॉइंट सेंस इसलिए भी बनाता है कि चलो ठीक है, इनडायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकते हो। बट फनी ये है कि देर इज दिस एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन इन मार्केट, मतलब कि ना तो सप्लाई करने वाले को पता है कि लाइक वो कितना देगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड रेट होता है, उसको एक्सपेक्टेड रेट कहते हैं। ना डिमांड वाले को पता है कि उसको क्या मिलेगा। तो वी आर, मतलब वी आर जस्ट सपोर्टिंग द मार्केट मैकेनिज्म, जो कि ये है कि सप्लाई और डिमांड एक्सपेक्टेड रेट्स पे या प्रीवियस रेट्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अब होगा ये कि ओकेजनल मीट ईटर जो होगा, वो मार्केट जब जाएगा, तो वो मार्केट में कंट्रीब्यूट तो कर रहा है मनी के लिए, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉमोडिटी जो होता है, कॉमोडिटी जैसे समझना, कैडबरी वाली जो कंपनी है जो चॉकलेट बना रही है, वो इसलिए नहीं बना रही कि तुम खरीदोगे या रैशनल रेलम खरीदेगा या मैं खरीदूंगा, नहीं। ही इज जस्ट मेकिंग देयर चॉकलेट्स फॉर कस्टमर्स, एंड कस्टमर कौन है यहाँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कस्टमर इज नॉट इन अ डेलिब्रेट, मतलब पैशन टू ईटिंग थिंग, जैसे कि अल्कोहलिक्स होते हैं जो डेलिब्रेट होते हैं। ओकेजनल जो मीट ईटर है, वो पहुंच ही इसीलिए रहा है कि ही इज एन ओकेजनल पर्सन, मतलब मार्केट में वो बिल्कुल वो वाला है, टिप टाइप है, कि मतलब आया गया। अब यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है कि दैट व्हाट्स मेक हिम मोरली रिस्पॉन्सिबल फॉर his acts in this occasional exchange. बोलो बोलो रैशनल रियल में अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है, आर्ग्यूमेंट है सपोर्ट। ओकेजनल। हाँ बोल लो, तुम्हें बोलो फिलोसफिकल। ये जो आर्ग्यूमेंट है ओकेजनल ओकेजनल मीट ईटिंग वाला, ये मैंने आज ही देखा, तो इस पे अपना क्या ओपिनियन है उससे पहले मेरे को थोड़ा सा सोचना होगा, मतलब समय चाहिए मेरे को थोड़ा सा अच्छा। हाँ मतलब, अच्छे से इस चीज को एनालाइज करना होगा कि मतलब आर्ग्यूमेंट कहाँ तक सक्सेसफुल है, इसके हर एक premise को ठीक, देखना होगा। अरे वो ठीक उसके है। बाद मैं अपना ओपिनियन बता पाऊंगा। अरे नहीं यार, वी आर नॉट, मतलब सबमिटिंग असाइनमेंट्स ना, मतलब वो करते रहो। अभी के लिए जैसे मैं तुमसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि मीट ईटिंग इंट्रिंसिकली गलत है, लाइक खाना इंट्रिंसिकली गलत है। नहीं नहीं, इंट्रिंसिकली ये चीज रॉन्ग है कि हम एनिमल्स को एज अ स्लेव्स या फिर एज अ कमोडिटीज यूज कर रहे हैं। सफरिंग, मतलब उनकी लाइफ लेना, राइट टू लाइफ को वायलेट करना, ये इंट्रिंसिकली रॉन्ग है। ठीक है। या फिर उनके जो वेरियस राइट्स होते हैं, जो राइट टू बॉडी, बॉडीली ऑटोनॉमी का जो राइट होता है, वेरियस राइट्स को वायलेट करना, ये इंट्रिंसिकली रॉन्ग ओके। सो अब देखो, यहाँ ये जो आर्गुमेंट है जो कि वीगन्स भी मानते हैं, इट्स एन बेसिकली द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ, मतलब मोरल या मोरल एजेंट्स विथ देयर एक्शंस और देयर कंसिक्वेंसेस, ठीक है। बट इस केस में ये इसलिए यूनिक है कि दैट एनी थिंग, जैसे राइट्स हो गया, कोई भी मतलब यूनिक प्रॉपर्टी ला दो जो कि एक सिग्निफायर टाइप है, कि मतलब इट एक्सीड द बेसिक अंडरलाइंग पिनिंग्स की, मतलब एक एनिमल तो है ही है, बट जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर है, जैसे राइट्स जो हम लोग मान रहे हैं, या अदर थिंग्स लाइक उसकी लाइफ, उसकी ऑटोनॉमी, ठीक है, या सफरिंग एंड ऑल। तो ये 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 डायरेक्टली वॉयलेट नहीं हो रहे हैं ओकेजनल वाले केस में, इसलिए उसका रीज़न ये है कि देयर इज नो लिंक। द फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो लिंक, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सक्सेशन, कि लाइक जैसे कि कॉजेशन जब होता है तो देयर इज लाइक अ कांस्टेंट सक्सेशन, देयर इज अ कोरिलेशन ऑफ कोर्स,
कि मेरे मार्केट जाने में मार्केट का मतलब एक ऑफ कोर्स जो भी मतलब कटिंग कटेड फिश है, सॉरी फिश है, मतलब जो पहले से कट पिट के रखा है, वो मुझे मिल जाएगा, मैं उसको घर लाऊंगा एंड आई कैन ईट दैट फिश. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ, मतलब वही जो एक प्राइमरी assumption है कि देयर हैज टू बी दिस डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मोरल एजेंट्स एंड देयर एक्शंस एंड consequences. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि दैट आई एम नॉट इंटेंशनली वायलेटिंग इट, क्योंकि आई एम जस्ट वांट अ कमोडिटी. अब यहाँ ये बात है इंटरेस्टिंगली कि कमोडिटी ट्रीट ही नहीं करना है, एंड दैट्स योर पॉइंट. ओके, तो इस पे मतलब आई कैन थिंक कि हम्म लाइक क्या कमोडिटी हो सकते हैं एनिमल. दिस इज द मतलब द राइट क्वेश्चन विल बी कि इज एनिमल्स मतलब कमोडिटी अ कमोडिटी. रैशनल रेलम इस पे आप बोले कुछ. So I think we need to draw a distinction between two things. One is like factory farming, and another is our own personal consumption of meat. Clearly, factory farming is, I think, wrong. At least the current forms of factory farming is wrong, and the reason is they cause a lot of suffering to the animals. And also, they are treating animals as a commodity. They disregard the interest of the animals, and so on. So we can agree that factory farming is wrong. But there is a like it is a separate question whether our consumption of meat is wrong or not. Because when I'm eating the meat, I'm not killing any animal, right? I'm not torturing any animal. I'm just eating some dead matter, which is very nutritious for me and very like tasty, right? Hmm. Now, is it wrong for me to eat meat? That is a very separate question from the question that Yes, factory farming is wrong. yes, And I yes. think it is wrong for me to eat meat in the case when I actually like increase the supply or I actually like cause those factory farmers to kill one extra animal. Hmm. Now, if I follow a, like a non-vegan diet in Hmm. general, if I have a non-vegan diet my whole Hmm. life, then Hmm. of course I am going to contribute to some kind of animal killing. But when Hmm. I eat meat occasionally, suppose eat meat on some particular occasions, I don't generally eat meat. I'm a vegan, say, Hmm. for my like generally I'm a vegan, but sometimes I like consume meat. Then that Hmm. is not going to increase the supply of meat in the market. That is not Yes, going to make any kind of like contribution in how the factory farming is actually going on. And in that yes. case, I think like occasional meat eating will turn out to be okay. It won't be wrong. Hmm. Right, right. So yeah, this is the like great response. I think this half, like first half of our like counter against कि veganism completely काम नहीं करेगा, कुछ of course exceptions पे, but question जो है, जो important question है, I'll like to raise it. क्या एनिमल्स कॉमोडिटी हो सकते हैं, लाइक इवन दे आर डेड? समझ रहे हो ना कि लाइक नाउ दे आर डेड, वी नो कि दे आर मतलब दिस फिश इज डेड. अब देखो उसका रीजन तो साफ है कि लाइक उसको मारा गया है, वो तो हम समझ रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज कि क्या अगर हम ऐसे ही देखें कि लाइक दे आर जस्ट डेड, तो क्या ये हम ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकते हैं? या समझ रहे हो ना कि लाइक हम उसका जो या जो कैटेगरी है या क्लास है उसको बढ़ा सकते हैं. एंड देन इट इज लाइक अ सीरियस क्वेश्चन, क्योंकि देन एक अच्छा कोई क्वेश्चन ये हो सकता है, लाइक वी कैन लिटरली अटैक द रिचुअल्स ऑफ, जैसे हिंदूज रिचुअल्स है मान लो, एंड दे आर बर्निंग द ये बॉडीज. सो दिस will be an very like funny or even rage bit argument कि क्या ही दिक्कत है अगर ये मरी हुई लाश भी, समझ रहे हो ना, अगोरीज टाइप खा लेते हैं, तो क्या ये सही है कि लाइक कॉमोडिटी कर सकते हैं किसी भी मरी हुई चीज को? आई थिंक ये इस चीज पर है कि मतलब हमने जो उसको मारा है वो मतलब वो जो उसकी जो डेथ हुई है वो क्यों हुई है डेथ. अगर उसकी डेथ नेचुरल कारण के उससे हुई है कि अगर उसकी डेथ में तुम्हारा कोई कॉज, फॉर एग्जांपल एक जानवर दूसरे जानवर को मार देता है, एक हम्म. शेर एक हिरन को मार देता है, और तुम हम्म. वहां देखते हो कि हिरन जो है वो पहले से ही डेड है, तो मेरे ख्याल से उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. राइट. लेकिन अगर अगर तुम खुद कॉज कर रहे हो, जैसे कि
आज का जो मीट ईटिंग का सिस्टम है, पूरा फैक्ट्री फैक्ट्री फार्मिंग का सिस्टम है, वो तुम्हारे उससे ही चल रहा है। सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है कि तुम खाना चाह रहे हो मीट, इसलिए सामने वाला मार रहा है। सामने वाला नेचुरली नहीं मार रहा है। अगर तुम खाना छोड़ दोगे मीट, तो सामने वाला मारना बंद कर देगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक जो है डिफरेंस है इस चीज का, कि अगर तुम खुद कॉज कर रहे हो, मतलब इफ यू आर पेइंग समवन टू किल समवन, देन थिंग दैट्स रॉन्ग। आई थिंक, मतलब समझो समझो, दिस दिस मतलब दो 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 इसके आंसर्स हैं। पहला तो मोरल ब्लेम वर्दी कौन है, तो भाई हम नहीं है यहाँ। क्वेश्चन ये है कि ईटर हाँ पे हाँ ब्लेम हाँ, ब्लेम बिल्कुल। आएगा। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ईटर पे हाँ ब्लेम हाँ। आएगा या जो जिसने किया है, मतलब जो बुचर है। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स ऐसे काम नहीं करती, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। इकोनॉमिक्स कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकती है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे समझना ध्यान से। मान लेते हैं कि दे आर सम न्यूरल फायरिंग इन माई हेड कि हाँ, आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस चिकन। अब जैसे ही ये हुआ, तो मैंने विल की एंड नाउ आई एम इन एक्शन, बिकॉज मेरी डेस्परेशन बढ़ी टेस्ट के लिए, और मैं मार्केट जाता हूँ। ठीक। अब इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे मार्केट जाने के बाद भी, इवन मीट खरीदने के बाद भी, मार्केट ये नहीं जानता है कि मैं कौन हूं या किसने मीट लिया या क्या किया। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मार्केट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। वट एवर वी सी इज जस्ट रैंडम पीपल, जिसको हम एक एक टर्म देते हैं। जैसे समझना, सोसाइटी इज अ टर्म, इट्स नॉट अ रियल थिंग। समझ रहे हो? तो जब मार्केट हम कह रहे हैं, तो हम वी आर बेसिकली कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एक्सचेंज। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि वी नो कि भाई हमारे जाने से वहां ये बढ़ेगा, तो ये गलत होगा। क्योंकि वही मेरा आर्गुमेंट है कि सिमेट्रिक नॉलेज नहीं है। जैसे ही मेरे न्यूरल फायरिंग हुई, ये वो हुई, मैं गया भी खा के आ गया, तो भी कहीं से कहीं तक मार्केट को नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अगेन द मार्केट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग। व्हाट मार्केट नोज इज बेसिकली एक्सपेक्टेड नंबर्स। जैसे कि मान लेते हैं आज मार्केट अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, और आज जैसे ही वो एंड करेगा, तो वो लिखेगा सेल्स, और सेल्स लिखेगा और कॉस्ट लिखेगा कि कॉस्ट उसको कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ। अब समझना ध्यान से, उसको ये भी पता चल जाएगा कितने लोगों ने खरीदा, इंडिविजुअल्स ने। बट अगेन, इन मार्केट इंडिविजुअल्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। अगेन, दे आर नॉट रैशनल रैल्म, फिलोसफिकल थिंकिंग, ओरिएंटल थीस्ट। मार्केट डज नॉट केयर अबाउट कि कौन आया कौन गया। दिस इज द माई आर्गुमेंट कि लाइक जो ब्लैक बॉक्स है ना, ब्लैक बॉक्स ऑफ मार्केट, it does not care. It will supply the meat, it will supply the chicken, it will supply the fish. It only cares about the accounts. Accounts में abstract चीजें ही डिस्कस हो रही है। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट मतलब सब्जेक्ट। तो समझ रहे हो ना, मतलब हार्ड आर्गुमेंट ये है कि लाइक, मतलब जो वीगन्स के लिए हार्ड आर्गुमेंट वही है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे सिर्फ मार्केट जाने से ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कुछ स्पेशल हो जा रहा है। समझ रहे हो? मतलब कहने का अर्थ ये है कि मार्केट इज अ एब्स्ट्रैक्ट थिंग। आई थिंक हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इट्स इट इट्स विल नॉट चेंज। इजी टू प्रूव कि अगर हम ऑफन ऑफन मीट खाते हैं, कि मतलब अगर हम रेगुलरली मीट खा रहे हैं, मान लो वीक में एक बार, या फिर 2 वीक में एक बार हम ऑफन मीट खा रहे हैं, तो इट्स इजी टू प्रूव कि तुम्हारा भी इम्पैक्ट है उस मार्केट में। तुम्हारे इम्पैक्ट के कारण जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है मीट की। तो वहां पे मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजीली प्रूव हो सकता है। हाँ, बात ये है कि हम ओकेजनल मीट ईटिंग के लिए ये सेम चीज कह सकते हैं। उसके लिए आई एम आई एम नाउ न्यूट्रल, कि मतलब आज ही मैंने ये आर्गुमेंट सुना है, तो मैं न्यूट्रल हूँ इस चीज पे। लेकिन हाँ, कि अगर हम रेगुलर मीट खा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इजी है ये प्रूव करना कि इम्पैक्ट होगा। ऑफ कोर्स इम्पैक्ट होगा। यस यस, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट अगेन ओकेजनल वाले में ही मैटर है। एंड देखो, इसमें आंसर ना रियली क्या है, क्वेश्चन जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है मे बी ये एक एक्सेप्शनल केस है वीगनिज्म के अगेंस्ट में। क्योंकि यूजुअली मीट ईटिंग इसलिए बुरी है क्योंकि इट कॉजेज द किलिंग, पेन एंड अदर थिंग्स फॉर अ दैट एनिमल। बट ओकेजनल केस इज वेरी डिफरेंट ना। जैसे तुम्हें भी पता है कि इट्स नॉट सेइंग कि तुम्हारी इंटेंशन मैटर ज़्यादा करती क्योंकि तुमने डायरेक्ट कॉज किया, नहीं। इनडायरेक्ट किया वो भी नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट तो अपना फंक्शन रेगुलेशन करती ही करती। सो द थर्ड आर्गुमेंट इज कि इज इट ओके टू ट्रीट एनिमल्स एज अ कमोडिटी।
और डेड एनिमल्स एज अ कमोडिटी। मे बी शायद इसमें रैशनल रियल्म का कोई आर्गुमेंट हो या एब्जेक्शन हो या कोई एडिशन हो तो ही कैन से। So yeah, let's start by talking about humans. We don't generally like if when human dies, right? When human beings die, we don't start eating them or we don't start using their body parts. So if people, suppose a family, when their family members die, start eating them, start eating their dead body, we'll find that very problematic, right? We'll find their attitude very problematic. And I think the reason is that, see, we judge action on a lot of different bases. Sometimes we judge an action based on like its outcome, like what kind of outcome it is producing. Sometimes we just actions based on like on whether it respects the rights of others or not, whether it is fulfilling your like rational obligations towards others. And sometimes we judge people's actions also based on whether it is coming from some kind of virtuous dispositions or not, whether it is virtuous or vicious. And I think when people consume, if people consume the meat of their family members, that actually shows some kind of vicious disposition on their part. So their actually mental faculties are not working properly. There's something vicious about their psychology. And that is what problematic part. And that explains why consuming your own family member's dead body will be problematic. Now, there are other cases where I think the use of human bodies will be हम्म justified after they die. Suppose we need a lot of organs and we can save people's life by organs. And हम्म suppose that we can like take those organs from dead bodies, like people's dead bodies. हम्म Then in this case, I think we should take those organs so that we can save lives. And the हम्म reason is that it is not wrong in this case is because it is not coming from something like a vicious disposition. It is coming from a virtuous attitude. And हम्म similarly, in case of occasional meat eating, when we eat meat occasionally, I don't think it is coming from some vicious disposition, right? Because occasional meat eating is for your like own good. Sometimes you want to like have some kind of meat forms a healthy source of nutrients, so you can get nutrients easily from meat. And occasionally eating meat will be a good way to maintain your health, and that is not something vicious. You are not doing something vicious because you are maintaining the proper function of your body. You are actually acting in a proper way. हम्म What do you think of this? मतलब इज इट अ गुड मतलब सॉरी हाँ इट इज अ गुड आर्गुमेंट इट इज अ गुड आर्गुमेंट। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि लाइक जैसे मेरा ये कहना है क्योंकि समझो वी कैन टॉक अबाउट द बेसिकली द एनालिसिस ऑफ ईटिंग मीट और उसका जो भी कुछ है एंड वी अंडरस्टैंड कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ईट मीट ओकेजनली बिकॉज वो हमने पॉसिबिलिटी प्रूव कर दी है। नाउ द केस इज कि like is it okay to treat them as a commodity और इसमें भी एक मजेदार चीज ये है कि that you mentioned that word ना vicious dispositions। अब मतलब ये चीज और मैं समझता हूँ कि लाइक ये चीज हो गई कि लाइक जो डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन है या डेड बॉडी ऑफ एनिमल है उसमें क्या है लाइक क्या स्टेटस का क्या अंतर है लाइक तुम समझ रहे हो ना मेरी बात कि लाइक कहने का अर्थ है कि लाइक कोई मोरल लाइक अलग से कोई क्वालिटी है यूनिकनेस है कि लाइक जस्ट बिकॉज वी कांट ईट मतलब वही कि वी कांट ईट डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमंस बट हाँ ठीक है एनिमल्स का तो ओके है बिकॉज वी कैन इंक्रीज आवर हेल्थ एंड ऑल थिंग्स। सो इस पे क्या मानना है कि लाइक समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब कि इज इट ओनली द लिविंग थिंग्स हैज राइट्स। क्या एक हॉट टेक दूं? क्या दो। हेलो, हम्म। हॉट टेक। हाँ अच्छा दे लो तुम ऐड कर लो कुछ। अगर जो ह्यूमन है, अगर जो ह्यूमन है वो नेचुरल रीजन से डेड है, मान लो कोई हार्ट अटैक था, या फिर मतलब बहुत सारे वेरियस नेचुरल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण वो डेड है। और मतलब वो, और वो डेड ह्यूमन जो है वो तुम्हारे सामने है और तुमको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, या फिर तुमको मालूम है कि मतलब कि तुम्हारी डाइट जो है वो एडिक्वेट है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या फिर कैल्शियम या किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, एंड आई थिंक इट्स ओके टू ईट दैट डेड बॉडी।
हेलो। हेलो। जो मैंने बोला वो आई थी आवाज क्या उसकी अभी? हाँ वो तो समझ गया, तो मैं रैशनल से ही कह रहा हूँ, बोले वो। So I think in like case of humans, when we eat their body part, suppose you eat the body part of your family member after he is dead, he there's his dead body. The problem is that we bear some kind of relations to them, like they are like they were our family members, and when we eat their body part, we are not like we are disregarding their like desires. So when the person was alive, right? The person actually desired not to be eaten, right? He would find it extremely, if you got to know about that you're going to eat his body after he's dead, you'd find them extremely revolting. And by eating his body parts, you are actually violating his desires. But as his family member, you have a right to respect his desires. And as the respect gets violated when you eat their meat. And this is something like a human being can desire, right? This is human being can recognize these things. So I can desire not to be eaten after my death. I find them revolting, and because of that desire, other human What beings, about especially my random family human members, have a beings? right. मतलब फैमिली का तो मैंने मान लिया What? कि हाँ चलो फैमिली में होता है। हम्म। फैमिली का तो मैंने मान लिया कि चलो हाँ फैमिली में होता है, बट व्हाट अबाउट रैंडम स्ट्रेंजर्स, तो उनकी डेड बॉडीज का क्या? So when I die, so the thing is that my body, I think the actual ownership of my body gets transferred to my close ones, right? They get to decide how to keep my हम्म। body and how to body, etc. And for some random stranger to interact with my body, interfere with it, will be like problematic. They cannot do that. And also, I think the random strangers also have a right to like respect my desires, even if I'm dead, right? Even if I'm dead, my desires need to be respected. सो अगेन यही मैं बोलने वाला भी था कि दैट लाइक इफ योर आर्गुमेंट इज ट्रू, ठीक है, बिकॉज आई बिलीव कि इट्स लाइक नॉट सो लाइक, मतलब समझ रहे हो ना, इट्स नॉट अ मेन आर्गुमेंट, सब्सटैंशियल है सपोर्ट के लिए, बट देन इट लीड्स टू अस लाइक अ वेरी बिग पोजीशन कि एनिमल्स जो हैं दे डोंट हैव कैपेसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जो हम लैक कर रहे हैं कि लाइक ये मतलब सिर्फ इंसान में है, इफ यू आर लाइक पॉजिटिंग इट कि देर आर सम काइंड ऑफ एन एट्रीब्यूट, मैंने वही बोला था ना यूनिक, अगेन मैंने ये बोला था कि जो यूनिकनेस है कि ह्यूमंस में एक यूनिकनेस है कि दैट देयर इज डिजायर, तो इट्स बेसिकली लीड अस टू द स्टेट ऑफ इंटेग्रिटी डिग्निटी, यही सब हुआ ना कहने का, एंड इसका मतलब ये हुआ कि दैट ही हैज दिस dignity integrity, and because he has this integrity dignity we have to respect it because we also understand these concepts. Now the question is are they like animals, are they like black box, black box समझ रहे हो कि they can't, like because we can't observe their dignity integrity or any desire, so they are just black box, and because they are black box we can say कि that they can't मतलब they can't क्या कहूँगा मैं उसको, मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, बट दे कांट बेसिकली इम्प्लाई देयर ओन थिंग्स, जो कि उनके मतलब जो भी डिजायर्स हैं. सो या अगेन दिस बेसिकली मीन्स कि दैट वी आर काइंड ऑफ ऑन अ हायर पोजिशन देन देम, एंड वी कैन लाइक मतलब बेसिकली वही कि ह्यूमंस आर इक्वल्स बट एनिमल्स आर नॉट, एंड देन इट लीड्स टू लाइक वही मतलब मेजर प्रॉब्लम. So yeah, I think that like humans have like more value than animals. It is not like animals don't have value, but human have a higher value. And the reason is that human beings can have more sophisticated desires, which animals can't even like have in principle. And that difference actually bring a difference in value. Of course, animals have some forms of desires, and that actually give them some kind of value. Animals are valuable, but human beings are more valuable because they are more sophisticated beings who can actually have more sophisticated desires.
And due to those sophisticated desires, sometimes there will be like differences in judgment about how to treat animals and how to treat human beings in comparable scenarios. ठीक है बट मैं वही अगेन वही अटैक करूंगा कि दैट epistemically we are allowing a position कि that we are in a better situation to like transmit our emotions, our rights and anything, and we basically conceiving it very well. On the other hand, these animals, of course, as you said ki we are sophisticated, but animals don't have sophistications. Still the question is the same. Like even if like we are neglecting the first like my first thesis ki that it's okay to like call them ki हाँ humans have uniqueness, but again is it allowing us to treat them as a commodity? like ये मेजर क्वेश्चन है, ये इसका आंसर मुझे चाहिए क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक है, चलो यू कैन से कि I दैट think no. हाँ लाइक So कमोडिटी I समझ रहे it हो think ना? will no. depend on like क्योंकि the desires animals have, right? they they don't need to be Yeah. morally equivalent to human beings to have a moral worth. मतलब उनकी moral worth होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो humans के morally equivalent हो. They just need to have some moral worth, moral value. For example, a cow is not morally equivalent to a human being, but it's still wrong to kill kill her, right? तो आई थिंक यही है कि मतलब animals still have some rights like right to life, bodily autonomy and etc. इस टाइप के राइट्स. तो अगर वो ह्यूमंस के मोरली इक्विवेलेंट नहीं भी हैं तो भी उनको स्लेव्स की तरह यूज करना या फिर कमोडिटीज की तरह यूज करना वो रॉन्ग है क्योंकि उनके पास एटलीस्ट दे हैव सम मोरल वैल्यू, मोरल वर्थ. हाँ ह्यूमन से कम है लेकिन है तो सही कम से कम. Wait a minute. So what does you mean by moral worth? Like So can I say they feel something? pain. हाँ हाँ They yeah. are sentient beings. They are conscious beings. Okay okay yeah, rational speak. So see, animals and human beings have other desires, right? That is the first point. The second thing is that we can treat animals and human beings as commodities in different ways. Okay. And the thing is, when we kill an animal, right? Hmm. If I kill an animal, I am doing something wrong because the animal has a desire to live. The animal want to live, right? Because the animal wants to live, and if I kill him, I am like frustrating his desires. I'm not letting his desire be satisfied. That is what makes killing of an animal wrong. Hmm. But animal cannot have like desires about how his body should be treated after he is killed. He doesn't have desire that my body should not be used to eat meat. He cannot even conceive of those desires. But human beings have more sophisticated desires. A human being do desire not to be killed, and a human being वैष्णव also desire that his मेरा एक body So सवाल है. not be like used in certain ways after death. yeah yeah yeah. Yeah, so because of that difference in desires, what happens is that in both cases, yeah, we should not kill animals and we should not kill human beings. But we should also not use human beings' bodies for certain kinds of things because that frustrates their desires. But in case of animals, animals don't even have those desires, so there is nothing to be frustrated. Okay okay, किसी को कुछ कहना वैष्णव जन मेरा एक सवाल है. है? Hmm. So it will be wrong to say treat animals as a So commodity in the sense of like farming them by killing them and farming their meat. So factory farming is wrong, right? Because we have to kill animals Yes to yes. farm their meat. In that sense, it is a practice that is treating them as commodities, as things to be used, and that is wrong. We should like give consideration to Wait their desires, wait. to their desire to live, etc. Okay okay okay. हाँ बोलो so क्लोज. so I am asking कि मतलब there are human beings they don't have any desire to live. Like मतलब बहुत सारे मतलब उनको प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और ये सब चीजें होती है मतलब दे डोंट वांट टू लिव. तो क्या उनको मारना सही होगा? So, what we should consider about an agent is what he will desire in an idealized context. So, we have to treat the ideal version of an agent.
So what you actually desire doesn't matter. What you will ideally desire will matter. So an ideal agent is one who is actually rational. So he will be fully rational, and he will have information to the facts correctly. And because of that, his desires will be different than the desires of an actual version of him. And what we have to consider is what an agent will ideally desire. And then no agent is, so my claim सपोज will be कि that no मतलब agent will ideally desire their death under most contexts. सपोज कि मतलब वो रैशनल है एंड उसने जो भी अपने आसपास के फैक्ट्स हैं इंफॉर्मेशन है उसको Yeah, so एनालाइज किया एनालाइज so करने के he's बाद like एनालाइज करने के बाद उसने देखा कि mhm. उसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा बेकार है his life is not worth living so that's why we don't want to live. So that will depend on the case, right? So what I think is that if he's like if he's a person like he will only desire not to be lived if he's like suffering intensely, like his whole life is suffering intensely. Only in that case he will ideally desire not to live. But in other cases where his life is, even if his life contains some suffering and even if his life is quite boring, he will not ideally desire not So to live. That is my claim. you are accepting कि मतलब उस पर्टिकुलर केस में उसको मारना सही होगा. So in a case where a person is like significantly suffering for all time, yeah, I think it will be like permissible to kill that person. Okay. It might also be obligatory, right? We are like removing him his suffering. So if you are always like having headaches, say for all time you are suffering from headache, fever, etc. Your skin is burning all time. If you are in such a state, then that state actually I think it will be better for you not to be in that state. Okay. Hmm. So only in such cases I think it will be permissible and even say obligatory to kill you. But in all other cases, no one will ideally desire to die. Okay. So. So if you are like, if you are having a desire to die due to some kind of like compulsive disorder, some mental disorder, a Mm-hmm. rational agent won't be suffering from any disorder. So his body functions will be performing like perfectly. He has proper functioning. His mind is functioning properly. And due to that, he won't desire to die because he will be lacking those disorders in that ideal case. Mm-hmm. Okay. So you are like completed now your statements. Yeah. एक और सपोज कि मतलब वही पर्टिकुलर सिनेरियो है उसमें उसकी सफरिंग बहुत ही ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा उसकी सफरिंग है बट स्टिल वो ये चाहता है कि उसको ना मारा जाए ही वांट्स टू लिव लेकिन लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में एक रेशनल एजेंट जो है ही डज नॉट वांट टू लिव ओ सॉरी ही वुड नॉट वांट टू लिव अ रेशनल एजेंट वांट्स टू डाई राइट तो मतलब इस केस में फिर क्या करना चाहिए इसको मार देना चाहिए या फिर उसको जिंदा रखना चाहिए. So it will depend on what he will ideally desire, right? If he ideally desires not to live, I think it will be Mm-hmm. permissible to kill him. Mm-hmm. सो सो तुम ये कह रहे हो कि मतलब अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा सफरिंग से जा रहा है एंड ही स्टिल वांट्स टू लिव लेकिन जो कि उसका एक आइडियल वर्जन है जो कि मरना चाहेगा इसलिए हमें उसको मार देना चाहिए. दैट्स रॉन्ग आई थिंक. So I think you are describing the case like mistakenly. So what is happening is that if a person is suffering very intensely, such that in an ideal case he will prefer to die, then Mm-hmm. he must also like prefer to die in the non-ideal case, in the actual case. You cannot like intensely नहीं suffer बड़ा and also prefer not to die. नहीं, मतलब बहुत से ऐसे केस होते हैं मतलब अभी अभी तुमने एक्सेप्ट किया So, कि कोई in those cases पर्सन इतना in which like इरेशनल हो सकता है कि वो. Wait, wait, wait. Again, so repeat it. in those बोलो बोलो. cases so रुक जाओ in एक those लोग cases बोल which people prefer to die, रैशनल रैशनल. prefer not to die. वेट अ मिनट एक काम करते हैं ना Okay.
जब तुम लोग जैसे जो कोई भी किसी को बोलना हो ना तो ही कैन से कि आई बिगिन, ठीक है। और जब किसी को रुकना हो तो ही कैन से कि यू कैन, अदर्स कैन स्पीक, ठीक है। Okay. ठीक है। ओके। So I begin. हम्म। यस। So see, in the real life cases where people are suffering but they don't want to die, say many real life patients who don't want to die even if they are suffering, then I think that it will be wrong to kill them. And that is because I think their ideal self, their ideal version will also if they are saying that they don't want to die, it means their suffering is not that much, not intense enough to make it permissible to kill them. That is what I think. And if you say a case where like their ideal version would prefer to die, in that case, I think it must follow that in real life they must also prefer to die. If they are not, if they prefer not to die, then they're simply not suffering intensely. I end my point. You can continue. हम्म। सो आई थिंक कि इट्स स्टिल रॉन्ग कि मतलब अगर कोई ऐसा केस है जहाँ जहाँ पे एक एजेंट जो है वो इरेशनल है, और उस लेकिन उसके बाद भी उसकी सफरिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ही वांट्स टू लिव, देन आई थिंक कि मतलब उसको जीने देना चाहिए। एंड आई डोंट सी हाउ कि तुम ये कह रहे हो कि मतलब अगर कोई उसका रेशनल वर्जन ये चाहेगा कि मेरे को डेथ No, I चाहिए think तो that इट case is मस्ट फॉलो। impossible, right? तुमने कहा इट मस्ट फॉलो, तो मेरे को नहीं लगता कि इट मस्ट फॉलो कि मतलब अगर कोई उसका रेशनल एजेंट जो है वो डेथ को प्रेफर कर रहा है तो उससे ये फॉलो हो रहा है कि वो रियल लाइफ में भी डेथ को प्रेफर करेगा। इट इट मतलब आई आई डोंट सी कि हाउ इट फॉलोज। तुमने बस कह दिया कि इट मस्ट फॉलो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। हेलो। आई एंड माय So can I पॉइंट, continue? पॉइंट एंड कर दिया, बोलो। यस यस। यस। Yeah, okay. So my suggestion is that you are not suffering intensely enough. So it is impossible for you to suffer intensely enough to justify your death and also you to prefer not to die. This whole scenario is actually impossible in my view. The scenario where you are suffering intensely मतलब enough आई डोंट सी such that it एनी is permissible to रीजन kill वी you. एक्सेप्ट। So the reason to accept this is that see, बोलो। I think suffering is related to preference, right? So when you say that someone is suffering from something, that automatically means that he's actually preferring not to be in that state. So हम्म। a kind of preference where you want to live will contradict intense suffering. If you want to live, you are not suffering intensely. To ओके। live, so if you have a desire to live, that means you are not having the kind of suffering that I consider to be intense enough to justify your death. That is my point. So when I say that some suffering justify or make it permissible to kill you, that suffering must include this condition that it makes you desire to die. It must be able to make you desire to die, right? If it is not able to generate that desire, that suffering is not intense enough to justify that death, to justify your killing. ओके। Okay, I end my point. ओके। डू यू हैव एनी पॉइंट्स तो फिलोसफिकल? मतलब आई कैन लॉजिकली, हाँ, I can logically conceive of a scenario where the person is suffering from let's say, मतलब उसको एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है कि मतलब वो इरेशनल चीजें सोचता है, लाइक कि मतलब कि वो ढंग से एनालाइज ही नहीं कर पा रहा है अपनी सफरिंग को, जो उसको हम्म। सफरिंग हो रही है वो वो उससे इस कंक्लूजन पर आ ही नहीं पा रहा है कि ही वांट्स टू डाई, कि मतलब इट्स अ परफेक्टली कंसीवेबल सिनेरियो जो मैंने अभी अभी कहा। तो मतलब आई डोंट सी कि ये कैसे फॉलो हो रहा है। रैशनल ने कहा इट मस्ट फॉलो,
how does it follow? I still don't see how does it follow. I end my point. Okay. So if a person is suffering from some kind of like psychological disorder, which is making him not to want to die, right? Hmm. Then the thing is that what I am suggesting is that where I said that some state of affair, if a person is in some state of affair such that it makes it permissible to kill him, that state of affair must as a like a necessary condition include that in you the desire to die. If it doesn't include the desire, but if it includes if it comes with a desire in you not to die, then that is simply not that state of affair by definition, by stipulation about how I'm using this, like the state of affairs that justify killing. Let's call such state of affairs S. S stands for those state of affairs that will make it permissible or obligatory to kill you. I call them those state of affairs S. And it is permissible to kill a person only if he is in this state S. Now, what my thing is that I'm saying as a matter of stipulation only, as a necessary condition must produce in you the desire to die. Only then S can qualify as that state of affair that makes it permissible to kill you. It is a necessary condition, but not a sufficient condition. The sufficient condition will be that even you should also ideally desire to die. Hmm. So when you ideally desire to die, it makes it permissible to kill you. But when you just desire to die, it doesn't make it permissible. It is a necessary condition, even though it is a necessary condition. So that condition must be satisfied. So you must actually desire to die. In all those cases where it is permissible to kill you, you must actually desire to die, but that won't be sufficient. What will be sufficient is that you also ideally desire to die. Okay. That's my first point. Okay. So that is what my suggestion is. Okay. So in other words, in short, you it is permissible to kill you in only those state of affairs in which you actually and ideally desire to die. In all other state of affairs, it is impermissible to kill you. Hmm. ओके, अगर कोई पॉइंट ना हो तो मैं खुद बोलूं क्योंकि मैं कई देर से वेट कर रहा हूँ. ठीक है, सो आई कैन स्पीक नाउ. सो आई बिगिन. सो मैं ये कह रहा था कि द डिफिनीशन ऑफ अ कमोडिटी, मैं यहाँ शुरू से शुरू कर रहा हूँ. ठीक है, सो आई अंडरस्टैंड योर स्टांस ऑफ आइडियल डिज़ायर, और डिज़ायर मतलब आइडियल कंडीशन फॉर डिज़ायर, वो भी मैं उसको टैग मतलब उसके अगेंस्ट भी बोलूँगा. बट अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि द definition of a commodity, I believe the commodity, what we call as a commodity, yeah, what is a commodity? So I consider it as very implicit by our use. ठीक है, तो यहाँ मैं यूज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग द सोशल कम्युनिटीज डोंट प्रोड्यूस मतलब कमोडिटी. मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दैट इफ इवन इफ देयर इज नो सोसाइटी, देयर इज ओनली वन और टू पर्संस, और दे आर यूजिंग इम्प्लिसिटली, दे आर जस्ट मतलब दे आर बिलीविंग इट कि लाइक दे आर जस्ट यूजिंग इट. जैसे मोबाइल है तो आई एम जस्ट यूजिंग इट, समझ रहे हो? तो इट्स इज बेसिकली दैट आई एम जस्ट कंज्यूमिंग इट, कंजम्पशन. बेसिकली इट्स अ कंजम्पशन, माई एंड इज जस्ट कंजम्पशन. So by default they are in my use, and this use gives them a category where I am the user and they are the products. अब यहाँ समझने की चीज ये है कि सोशल कमोडिटी वाली जो बात है कि दैट मार्केट क्रिएट्स द कमोडिटी, आई थिंक इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्योंकि इसमें मार्केट पहले है, understood, like it predates the commodities and then commodities are later. But I believe कि उल्टा होता है क्योंकि commodities पहले होती हैं, then we have supply, demand and other things, and then we create market. Okay, now my thing is कि like अगर मैं meaning ये रखता हूँ कि this dead chicken is a commodity, then I really mean it. Understood ना, मतलब वो तो basic चीज़ है कि that I know कि what commodity means. Now the interesting thing is कि is it to मतलब is it good to treat anyone on a divide of user and a product, where that
thing was alive back then, now that thing is dead. ओके, सो ये जो डिवाइड है ना, कि नॉन लिविंग थिंग्स पे तो समझ में आता है कि दिस इज मोबाइल, दिस इज सैनिटाइजर, ओके, दिस मॉइस्चराइजर क्रीम, वी कैन यूज देम, दे आर कमोडिटीज, खाना, फूड, लैपटॉप, ये माइक एंड ऑल. बट फॉर दिस मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस alive thing which is now dead, and the whole thing is कि is it make it any difference कि अगर उसको मार्केट रिकॉग्नाइज करती भी है या नहीं एज अ कमोडिटी. Yeah, my point is that you can begin. So what I think is that once an organism dies, we still have this obligation to respect his desires. So that organisms had desires, right? वेट Died. वेट अ There are a मिनट, lot ये of ये desires, नीचे etc. है. एक मिनट, ये ऊपर कैसे आएगा, ये क्या कह रहा है? अरे ऊपर आ जाओ, ये इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं रूल. आई कांट सी ऐसा सच सच रूल्स कि कोई तुम्हें खींच सकता है. ऊपर आ सकते हो, मैं बैक स्टेज हूँ. मुझे भी नहीं दिख रहा. हाँ, अपने आप से आ सकते हो, मे भी शायद कोई ऑप्शन होगा. क्लिक करो, माइक ओपन करो. मैं भी तो ऐसे ही आया था. अब मैं खुद से नहीं आ सकते, गजब. अच्छा, तुम्हारे प्रोफाइल पे क्लिक करके देखता हूँ, एक मिनट. तो होस्ट तो ससुर यहाँ कोई है ही नहीं. अच्छा, तुम नहीं आ सकते हो. ओश, यहाँ कोई होस्ट ही नहीं है. यहाँ कोई होस्ट ही नहीं है, वो चला गया. वो लगता है किसी को होस्ट ही नहीं बनाया. होस्ट को बुला, मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा तब तक. हाँ हाँ ठीक है, बोलो तुम, यू कैन से. So the difference between human beings and animals in this context is that while animals lack desires about how their body parts, how their bodies should be used after they die, humans have them, right? So that makes a difference in like whether we ओके should treat them as commodity or not, ओके whether we should treat their body as commodity or ओके not. ओके, सो I think it आई will be perfectly justified to treat. या स्पीक स्पीक. So it will be perfectly justified to treat animals' bodies as commodities. Of course, it will be wrong to kill them and produce it. I'm not suggesting that we should kill animals and produce their use their body parts because killing is wrong. But say some animals have died and you are no way contributing to their suffering by consuming some animal product, by हम्म. using some animal's body, you're no way contributing to any killing, anything like that. Then you are not doing anything wrong because you are not violating the animal's desires, not to not his desire, not his desire of his body should not be used. You are not violating that desire because that desire didn't exist. But in case of human beings, there will be such desires which you will violate. Why? That's why we don't actually use animals, human animals. We don't use human animals. We don't use their bodies as commodities after they die, even if we are not contributing to human killing. So if I see a human body, say in a graveyard, I cannot just use it as I like because I have to respect that person's desires. For example, I cannot like say I cannot go and just take a body from a graveyard and cook it. That will be deeply wrong because I have frustrated the desire of that person to die. So this is the idea basically. So ओके whether we should treat someone as commodity or not will depend on this factor. ओके ओके, सो आई कैन लाइक क्लियरली सी कि दैट दिस इज द क्लासिकल. मतलब मेरे पास सही बताओ तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उसको धीरे धीरे करके हम जाएंगे. सो द थिंग इज कि कॉमोडिटी, यू आर राइट कि लाइक इवन इफ देयर आर अ सिंगल पर्सन, still he can use a like animal, dead animal as a commodity, because commodity is basically a function of a thing to perform or to have satisfaction, basically a utility. It has some utility.
So the thing is कि यहाँ मैं ये question करूँगा कि this is not about the human animal relationship whereas the human is in a priority, some kind of a an in an a priority, and on the other hand that animal has no priority. I'll rather question your idea of a moral treatment, moral agent, and who is like considered to be as uh, matlab considered to be as worthy of morals. Yeah, speak it. So, so where are you doing this live? You are using StreamYard to like live stream. Hmm. So StreamYard यूज कर रहे हो क्या लाइव करने के लिए? क्या कर रहा हूँ यूज? अगर नहीं कर रहे तो ये बंद कर, लाइक यूट्यूब पे तुम लाइव कर रहे हो ना अभी? लाइव तो है थोड़ा। हाँ तो लाइक StreamYard से कर रहे हो लाइव? लाइक अगर हम ये रूम बंद कर दे तो लाइव चलता रहेगा या बंद हो जाए? ये स्ट्रीम बंद कर दें? लाइक ये StreamYard पे ये स्ट्रीम बंद करे तो लाइव नहीं चलता नहीं, रहेगा? लाइव तो चलता रहेगा। लाइव इज बेसिकली रिकॉर्डिंग, जैसे समझ आता हूँ हो क्या रहा है कि देयर इज दिस रिकॉर्डिंग ऐप जो मेरा हम्म। यूट्यूब की को मतलब वो सेलेक्टेड है, बेसिकली उसमें सेट है। तो जब भी मैं स्ट्रीमिंग ऑन करता हूँ तो बेसिकली वो मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड करता है। तो अब उसमें जो भी मैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा जैसे कि ओके। स्ट्रीम यार्ड, तो वो सीधे लाइव होगा फिर, क्योंकि वो रिकॉर्ड भी हो रहा है ना सेम टाइम। हाँ, हम्म। जैसे ही मैं लाइव बंद सो करूँगा वो अपने आप अपलोड हो जाएगा। आई वाज थिंकिंग कि by ending this we can like create a new room where we can add philosophical thinking. अच्छा, हाँ कर दो, वो उससे कुछ नहीं होगा, ये तो मेरा लाइव चलता रहेगा। कर दो, भेजो लिंक। ठीक है, लेट्स एंड इट। ठीक है, भेजो Okay. भेजो, इंस्टा पे भेजो। Uh-huh.
अरे ये तो सीधे स्ट्रीम कर रहा है यूट्यूब पे, अभी नया स्ट्रीम। अरे तुमने क्या किया था यार, सेटिंग बताओ एक बार बोल के, जो भी ये था एक बार बताओ, किया गया था कैसे, मतलब सीधे से प्लग स्क्रीन हो रहा था। ये डेस्टिनेशन पूछ रहा मुझसे। हाँ अभी भी चल रहा है, बट हो तो कब ना भाई, नहीं होगा तो फिर क्या करूँगा। मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सी दिस, वेट अ मिनट। अच्छा। हेलो हेलो। हाँ ऊपर आओ। अब आ रहे तुम लोग? व्हाट इज दिस है क्या? अच्छा, प्राइवेट चैट। हेलो। हाँ। आओ, ऊपर आओ, कैसे आओगे? कम अप। अच्छा, अब आओगे। नहीं, कैंसिल। वेट 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 वेट, आई एम जस्ट टेस्टिंग इट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ हो गया। हो गया। स्पीक। हेलो। हाँ बोलो। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी?
हाँ आ रही है। हेलो, वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है बोलो। क्या चल रही है स्टूडेंट? क्या कह हेलो। रहे हो? हाँ बोलो भाई। मेरी आवाज़ आ रही है ना तुम्हें? अरे शॉमी को भी लो यार। शॉमी को भी लो भाई, वॉइस आ रही है क्या मेरी? पहले बताओ। नहीं तो ये नहीं आ रहा है ना, इसका डिवाइस शॉमी को कनेक्टेड। ऊपर लो और। अरे कनेक्ट। होस्ट कहाँ है भाई? होस्ट कौन है इसका? वेट मैं हूँ। अक्षत कहाँ है? वही तो होस्ट ही नहीं है। अरे मैं आ गया। होस्ट आ गया। आ गया हाँ, भाई। टॉमी को भी ले अरे लो। जो शॉमी है इसको भी लो। उसका डिवाइस नहीं कनेक्टेड है। नहीं है कनेक्टेड, वो तो कह रहा है। अरे नहीं आ रहा भाई, लिटरली लिख रहा है तो भी कह डिवाइस रहा डिवाइस नॉट कनेक्टेड। नहीं तो मैं भेज सकता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ भाई, नहीं आया सच में। है। अरे नहीं, कोई नहीं भाई, मैंने टेस्ट है इतना तो नहीं। टेस्टिमोनियल एविडेंस। अरे नहीं, देख लो टेक्निकल इशू होगा कोई। जी। अच्छा अभी इसका ऑन हुआ, हाँ अब ऐड होगा। आ गया। नाउ ही कैन स्पीक। हेलो। स्पीक करो ब्रो। चलो ठीक है। सो माई सो हाँ, सो माई आर्गुमेंट वाज कि मैं यही कह रहा था कि कमोडिटी के लिए ही आर्ग्यूज। तो मैं ये कह रहा था कि दैट दिस माई मतलब माई अटैक इज ऑन कि दिस एटीट्यूड ऑफ डिवाइड कि लाइक ह्यूमंस हैव दिस यूनिकनेस। ठीक है, और मैंने वही क्वेश्चन पूछा कि द स्टेटस ऑफ मोरल एजेंट या मोरल नेचर कि like, किन बींग्स में है किन बींग्स में नहीं है। एंड इट वेरी स्पेसिफिकली डील्स विथ कि नॉन ह्यूमंस, जो नॉन ह्यूमंस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली द judgment depends upon or recognition of morals depends upon humans and humans only. So it also leads us to the anthropomorphic view like पूरी की पूरी जो morality है, and this problem also lead us to like classical problem, जैसे कांट ने भी इसी में यही माना था कि that only rational people have ये morality। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि लाइक ये जो एपिस्टेमिक इशू है, और इसको ध्यान से सुनना, दिस एपिस्टेमिक इशू, क्योंकि ये जस्ट एपिस्टेमिक इशू दैट वी कैन नॉट रीड देयर डिग्निटी, इंटेग्रिटी, देयर इमोशन, देयर डिजायर्स। फोर फोर चीज़ें हैं: डिजायर, देयर इंटेग्रिटी और डिग्निटी एंड जो भी मैंने बोला था। तो नाउ इट लीड अस टू कि दिस एनिमल्स आर ब्लैक बॉक्स because we cannot like see in their heads or in their mind that they are just thoughtless beings. Okay, this problem is really very concerning because it leads us to that humans are the one who produces moral characters or moral virtues, anything जो भी एक moral discourse है basically। तो क्या इसके आधार पे भी कैन से लाइक, क्योंकि अल्टीमेटली हम यही कर रहे हैं ना कि इसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि दैट देयर आर समथिंग्स और देयर आर सम बीइंग्स हु आर नॉट कैपेबल ऑफ से इट, मतलब स्पीक इट स्पीक। माइक नहीं किसी का खुला है। So I don't think that anthropomorphism will be a problem here because what I think is that it doesn't actually imply that animals are like thoughtless beings because animals do have desires. They have desires, but not the kind of desires we do. So they share some form of desires with us, but not all forms of desire with us. So there are some differences between animals and us in the terms of what kind of desires we have. So it is not like animals are like totally black boxes, thoughtless beings. They also can like feel, experience, etc. Right? And that gives them a lot of consideration. So we have to give them a lot of consideration. So morality in that sense do apply to animals, and here I'm talking about non-human animals.
humans, due to their rational nature, have obligations to other human beings and these animals. But animals, due to lacking this rational nature, doesn't have any kind of like moral obligation because you cannot morally praise or blame them. They are not able to recognize moral reasons. But when we act, we are able to recognize that things are right or wrong. We have this recognitional ability to see that certain affairs, state of affairs are good or bad. And that does bring a difference, right? Both in how we should be treated compared to animals and how we should act. So, in terms of how we should be treated, because of this difference in rational natures, we are able to entertain various forms of things that animals simply cannot. We are able to entertain very sophisticated kind of desires, and because of that, our interests are far more greater than their interests. They also have interests. They want to live, right? They want to experience happiness and so on. And those interests matter. We also have those interests, but we have some additional interests. Our interests are far more greater. And because of that, animals are less valuable than human beings. So if you have to save a human being or an animal, a non-human animal, I think most of us will agree that we should save the human being because we do recognize that human beings have this more value than a non-human animal. Their worth is more morally than a non-human animal, and this comes from this difference in their rational nature because we are more capable than them rationally. We are able to entertain various things they cannot. Mm-hmm. Okay, I end my speech here. Okay. So it is very interesting because I remember that word, like it is from this postmoderns. So they usually say this thing ki the idea of reason is deriving from the divide between what is not reason. मतलब कि reason and non reason जो divide है ना, it depends upon like people ultimately, because we don't know what reason really mean. Like we understand what is reason because we have this innate capacity, but again we cannot look into or inside of reason. So we find it as a force समझ रहे हो ना कि like reason is basically a force which leads to us very better rational results or successes. Now the whole point is कि जो रैशनल क्रीचर वाली बात है और रैशनल नेचर वाली बात है, व्हाट इट एड्स, मतलब बेसिकली एडिशनल, जैसे समझना मेरी बात को, लाइक इज इट नेसेसरी टू हैव मोरल नेचर, सॉरी सॉरी रैशनल नेचर टू बी मतलब वर्दी ऑफ मोरल्स एनी हाउ, लाइक इन डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट्स? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू ये है ना कि दैट जो जिसको भी हम रैशनल नेचर कह रहे हैं उसको भी हम डाउट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट अभी के लिए आई एम सेइंग कि लाइक is it a very strict thing? Yeah, you can like say कि ठीक है, we as a rational creature can also recognize the this moral status of animals also because they are not born to die again, and you accept it कि हाँ relatively we are above them, but still they have also this moral worth also. Yeah, so I do recognize that animals have value. So animals have a lot of value because while they are not rational creatures, they still are like sentient beings. They still can experience things. They can suffer, they can experience excruciating pain. And that on itself can give them value, give them moral worth. Although not as much worth as a human being, but these differences, these features that they have, does produce a difference in their moral world. They are not like plants or stones. Like you cannot treat an animal the way you treat a stone because a stone is not sentient. The stone cannot experience anything. But an animal, it is sentient. It has that difference. So there is a difference in treatment between animal and a stone, a non-human animal and a stone. And similarly, there Mm-hmm. is a
difference in the treatment between animal, a non-human animal, and a human being, because we also differ on some features. We are rational, animals are not, and that in some context will lead to different treatment. We'll not treat animal like we treat human beings on in those contexts, because in those contexts our rational nature makes a difference. Hmm. Okay. So, uh, isn't like मैं थोड़ा सा मतलब इसको लीड करूंगा इस साइड से, like your points are correct or even right, because the our best established knowledge about moral discourse lead us to this rational nature and rational creatures wala thesis. But isn't it like particularism type? क्योंकि मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि then the moral nature is not unique or universal. It is just particular with our rational creatures or some creatures, of course. And इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि there is also a relation, इस particularism में भी एक relation है, that there are some particular beings, those who have rational creature are different than the non-rational moral beings. मतलब animals are moral beings but they have this non-rational nature. So ultimately the morality implicitly समझ रहे हो ना कि moral understanding of humans implicitly believes कि that there has to be some this rational understanding, rational capacity or rational capabilities inside of moral worth. Am I मतलब making sense? Yeah. Okay, so basically we as a rational creature are generating the moral discourses, right? Yes. Only we rational creatures can like recognize morality. Hmm. Okay. So the my problem is कि अब मैं यहाँ मतलब मेन चीज पे आता हूँ कि the my problem is कि how do we like मतलब make sense to say कि like these things like कि जो भी virtues हैं, moral virtues or moral recognitions are rational at all, like what is reason basically? आई थिंक इट्स अबाउट कि हमारे पास रीजनेबल मोरल फैकल्टीज हैं नहीं, कि मतलब हमारे पास क्या वो फैकल्टीज हैं जिससे हम मतलब क्या चीज रॉन्ग है और क्या चीज सही है, इस चीज को हम मालूम कर सकें। और मुझे लगता है कि हाँ है, ह्यूमंस के पास ऐसी रैशनल फैकल्टीज हैं जिससे वो एथिक्स को मालूम कर सकता है, क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बेकार है, लेकिन एनिमल्स के पास वो चीज नहीं है। तो humans have access to moral epistemology, बस, but animals don't. तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एपिस्टेमिक पोजीशन में वी आर बेटर, एंड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग कि इट आल्सो इंक्लूड्स द एपिस्टेमिक पोजीशनिंग। क्योंकि दे आर देखो द मेजर क्या हो रहा है ना कि दैट एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी में जैसे एंथ्रोमॉर्फिस्टिक जो ये रैशनल रेलम ने बोला कि इट इज़ नॉट एन इशू, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की देयर इज़ अ डिवाइड बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, ठीक है, उसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि देयर मोरल सेंटिएंट बीइंग्स एग्जिस्ट, बट दे इफ दे आर नॉन रैशनल दे कैन नॉट जनरेट मोरल वर्च्यूज और मोरल अंडरस्टैंडिंग और मोरल डिजायर्स। मतलब कोई है ये नहीं सोच सकता है कि पूरे सारे हन समुदाय का भला हो, समझ रहे हो ना? तो वो जो अल्ट्रुइज्म का थोड़ा सा हम जो समझते हैं, बट स्टिल इट्स अ मोरालिटी, बिकॉज इन स्टैंडर्ड सेंस वी अंडरस्टैंड इट थ्रू यूनिवर्सल कंसिडरेशन, कि लाइक वी आर अप्लाइंग फॉर द होल, समझ रहे हो ना? इट हैज universal like consideration, like it will gonna apply on all the beings now. So हम ये समझ सकते हैं कि now we are मतलब we have better understanding about this discourse, and interestingly what I am talking about is this production of virtues
क्योंकि क्योंकि लीड क्या कर रहा है, रीजन इज द टूल ना विच लीडिंग अस टू द रैशनल एंड्स और रैशनल रिजल्ट्स और सक्सेसेस. सो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि इट्स लाइक लिटिल बिट ऑफ सर्कुलर या सर्कुलैरिटी लीड्स अस टू द सर्कुलर या विशियस सर्कुलैरिटी. हेलो फिलोसफिकल. एपिस्टेमोलॉजी में सर्कुलरिटी तो होती है, आई गेस। हाँ. हाँ तो मतलब वही बात है ना कि सर्कुलैरिटी ए हेलो। सर्कुलैरिटी बी से कैसे अलग है. हाउ वी आर बेटर. हाँ बोलो बोलो. रैशनल कैन स्पीक. हेलो. I think we are better because we are able to do things that animals can't do, right? We can like have these concepts that animals lack. Our conceptual like our conceptual faculties, the concepts we use in our life, much more have a language. Our ability to speak and communicate using a language makes a huge difference because we are able to have these complicated concepts to understand things. Like an animal doesn't have any concept of a month or a week, but we do have this concept of more like coherent concept of time, more precise concept of time. We can understand what a week is, what a day is, and we our desires are also like spread in these concepts. We think in terms of these concepts. We desire in terms of these concepts. And this conceptual difference is important because even though you might raise issue about whether we are like accessing the reality or not, one thing that is clear is that we are at least like doing these discourses, right? Whether these discourses produces true results, we are able to entertain these discourses, which Mm-hmm. animals are not able to even entertain. And Mm-hmm. that itself is a, I think, huge difference. Nice. I think सर्कुलैरिटी क्योंकि डिफिनीशन में सर्कुलैरिटी हो भी नहीं सकती है एंड दिस प्रॉब्लम विथ रीजन रैशनल. जैसे तुम कह रहे हो कि वी आर इंटरटेनिंग इट, मतलब वी कैन से कि दैट दे आर, मतलब एक चीज मुझे ये बताना कि लाइक जस्टिफिकेशन एक्सटर्नल होती है बिकॉज it cannot be internal first of all because it does not make sense. The second thing, it again cannot be circular. The important thing is how do we know that there are justification, मतलब समझ रहे हो ना कि what is literally a justification. क्योंकि whenever we're gonna talk about any definition of moral discourse or reason, there should have be a justification for it ना कि that हाँ we are justifying in believing कि हाँ there is a definition of this reason or moral discourse of veganism anything where we are able to talk, मतलब whatever you say like rationally or not rationally, मतलब other we like मान लो post modern so they will can say कि no you are not talking rationally, you are just talking मतलब normally. Okay, so there is no speciality. So yeah, so like how do you see like whenever we're talking about anything, and because we are always dealing with justifications because we are rational beings, so what do you think, what is like this literally what is the nature of justification, the justification really means. So I think, see, we are agents in this world, and we have this. We have to act in this world. You cannot like refrain from acting. So when you find yourself in this world, there is automatically this question about what to do. And when you are in this situation, you are actually in a kind of reflective state where you can like observe things and decide how to act, what to do. When we ask this question, we are automatically like we cannot take anything arbitrarily. We cannot just take any principle arbitrarily. You cannot say that I am just going to arbitrarily maximize well-being.
You cannot also take the principle that I'm just arbitrarily going to act upon my desires, whatever desires I actually have. Hmm. You have to look it from a very reflective perspective. You cannot take anything for granted and be in a reflective state where you are just assessing how to act. And when you are in this reflective state, one first idea we have got is that our principle has to be our principle of acting cannot be taken arbitrarily. It must be non-arbitrary. It must not be justified. It must be able to be justifiable without taking anything for granted. If we are trying to justify our actions, it must be justifiable without taking anything for granted. We cannot take something for granted. That's the first part, right? And the second part is that once we recognize that we cannot take anything for granted, whatever rule or a principle we follow, it must be applicable on everyone. It Hmm. must it must not be like they're only applicable for me, but it doesn't apply to you. You are outside of morality. That doesn't work. Whatever we do rule follow because of its non-arbitrary nature, because it has to be justified to everyone, right? So it must be a rule that applies to everyone. And because it is a rule that applies to everyone, it has to be a principle that is basically universalizable. You must be able to universalize it, right? Yes, This is yes, yes. basically the Kantian idea that we must be able to universalize on the principles we are acting upon. And I think this statement itself like ground our morality, right? I have given you an idea that whatever we are acting upon must be universalizable. I must be able to like wish that if everyone will it, there is no problem, right? Everyone must be able to will in accordance to this rule. हम्म. ओके. अच्छा. मैं मतलब I'll try to convey a very good idea even an objection if you like. I believe कि तुम इसका आंसर दे दोगे. मेरे पास भी कुछ आंसर है. तो just believe कि uh, मतलब we all believe कि there are justifications now because ultimately uh, justifications I think are very important. You मतलब do मतलब you also agree with me ना कि हाँ justifications are very important because all are we dealing with justification ultimately. So what I think is कि this sense of justification, like what is a right justification or wrong justification, इस पे मैं बस एक बेसिक सी चीज़ कहूँगा कि लाइक आई फॉलो लॉट ऑफ पीपल्स. तो मान लेते दे आर थ्री मतलब दे आर टू पीपल और थ्री पीपल वट एवर एंड अ पर्सन literally have this feeling of justification, not justification but this feeling of justification कि हाँ that I am correct about this proposition q, and then there is also another person who again feeling the same way and they're saying कि this my proposition r is correct. मान लेते हैं कि we assign कि q is true but r is false. So where is there is addition कि like क्या सही है क्या गलत है करेक्शन लाइक दिस क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथफुलनेस कि जस्टिफिकेशंस में होना चाहिए या दिस फीलिंग ऑफ जस्टिफिकेशन. व्हाट इज रियली अ जस्टिफिकेशन. So I think justification will depend on like truthfulness, right? What you feel, the mere feeling doesn't actually justify anything. Justification is an external matter in this sense because whether you are justified in believing something will depend on how the facts actually are, how reality actually is. You might feel the same thing in two contexts, but be justified only in one scenario because the facts actually obtain in that scenario. So justification cannot just be about how you feel because see, we can have people who have like an internally consistent system of beliefs. Their beliefs are like internally consistent. They're internally not having any kind of contradiction in their beliefs. But even then, their beliefs can be unjustified, right? Because we can have internally consistent people of any view. You can have internally consistent utilitarian ontologists, internally consistent flat earthers, etc. And they won't be contradicting themselves when they hold this view. But the problem is that
Mere internal consistency doesn't guarantee you justification, because to look at what justifies beliefs actually will depend on factors beyond what you can actually access from your mind. It will be beyond your feelings. Mm-hmm. So that's the idea. Mm-hmm. So it's basically a मतलब part of belief. Hmm. I agree with it. मतलब I see it as कि like they are just justifying what is justification basically. So it's like expression क्योंकि क्योंकि ultimately belief खुद को ही like जैसे अब if I were this belief कि there is this cow black cow ठीक है so I am justifying in believing in when there is such a cow and this has to be a fulfilling a condition because ultimately truth conditions are implicit na with belief and my attitude is also very important because my attitude is intellectual मतलब वही rational कि like I'm also expressing कि हाँ there has to be this condition truth of cow has to be black ठीक है and if this condition is basically like I'm believing in something and if this condition does not fulfill the right the correspondence then I'm failed to believe basically I don't have any justification to believe and this is the justification is right. Yeah, Okay, so I think then then animals cannot provide any kind of justifications because it's impossible to even recognize the justifications or natures of justification and this is very important because I'm saying this because then they don't have any rational capacity or capability to express like जैसे कि जब हम justifications की ही बात करें तो they we are making any sense okay now we also convey this sense through communication language now what language shows us and I believe कि it's a very rationalist belief जो मैं मानता हूँ कि that language is not a simple thing it's not just our capacity it is basically a highlight that language is expression of our rational thoughts with our demands our even internal structures मतलब तुम जानते होगे कि this correspondence of mind and language कि there is this kind of expression and basically the mind expresses itself is in through language so the whole thing is that both are rational तो language arbitrary नहीं हो सकती है now you can connect it with Wittgenstein na the same idea and this is very interesting because if they don't have any linguistic capacity so they cannot also convey any sense मतलब sense of क्या sense of understanding recognition and anything so ultimately it depends upon us अब मेरा क्वेश्चन यही है मतलब जो शुरू का क्वेश्चन था एंड दैट क्वेश्चन वाज कि दैट दे होल्ड अ मोरल वर्थ अब मुझे ये बताओ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जस्ट इमेजिन कि देयर इज दिस डॉल ठीक है एंड दिस डॉल नेम एज एल्सा नाउ this doll has all this animalistic virtues या जो भी कह लो कि like sentient है feeling desire भी है छोटी मोटी बट इतनी complicated नहीं है बट important है कि ये डॉल है मैं इसलिए ऐसा बोला क्योंकि एनिमल बोलने में ये होगा कि दे हैव सम इंट्रिंसिक थिंग एट ऑल बट ऐसा नहीं है मान लेते कि डॉल कम्प्लीटली आर्टिफिशियल है बट इसको ये सब कुछ फील हो रहा है नाउ अब ये रिफ्लेक्ट तो कर नहीं सकती है यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो अल्टीमेटली देयर इज नो नेचर ना मोरल नेचर जो इसकी हम बात कर रहे थे तो तो इफ अ ह्यूमन हैज ऑटोनॉमी then ultimately we are guaranteeing or making moral control over them basically yeah so it is an end of my point ये यूट्यूब की जो लाइव में ये चैट को दिखा रखा है भाई। चैट आ रहा है उसमें सारा दिख रहा है जो भी हमारी चैट है।
अरे तो हम लोग बहुत डिसेंट तो बात कर रहे हैं, क्या कर ही रहे हैं? अरे अरे वो नहीं, फिर भी सही नहीं लगता, हटा दो। असलियत में, असल में बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। आई एम अ मॉड ना, तो इसकी वजह से मुझे मुझे चैट देखना पड़ेगा कि लाइक मान लो कोई आ गया, फिर वो कहेगा कि तुम देख ही नहीं रहे हो। कौन आ रहा, हम तीन ही हैं वैसे, हाँ और हाँ, कोई नहीं आने वाला। ठीक है, हाँ, रैशनल 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 कैन स्पीक नाउ। So yeah, I agree with you that language is basically our expression of our thoughts. So we have these thoughts, right? We have these mental states, beliefs, desires, attitudes, etc. And in language, we basically are conveying our thoughts, like what we think. So language has this very intimate connection to our mind. The mind is related to language in a very intimately connected way. And the purpose of language is basically to convey our these mental concepts, the concepts we actually can recognize and reason about. But animals lack this faculty of using language. They cannot communicate, even if they're feeling something, they cannot communicate it. They cannot actually say that they are in pain. They have no way to actually talk about it, and हम्म that is a difference. And that also has a very like conceptual angle because some kind of mental states which we are in are because of our like rich conceptual vocabulary. I हम्म have a desire to go to see a movie on Sunday. I can have this desire, this mental state, only because I can recognize this concept such as Sunday. If हम्म I don't have this language, I won't be able to have this desire, this particular desire to go to watch a movie on Sunday. Animal cannot have this desire because they don't even have these concepts to form these desires. And that is why there is like this differences in the desires of an animal and a human being. The thing is that because we can recognize these concepts, we can see that others are experiencing pain and we can recognize about others' pain too. So, because of our ability to articulate language, not only do we recognize our own experiences through language, but we can also talk about others' experiences through language. हम्म And similarly, we can actually like talk about the experiences of an animal. So a non-human animal cannot be able to speak about his experiences, but we can actually speak about them. And this actually brings to the nature of our obligation, right? When we have obligations to other human beings, a part of this is that we are able to recognize how they feel and think. And this ability to recognize how they feel and think has to do with our ability to recognize language. But even when non-human animals lack this ability to articulate their feelings, because of our own rational nature, we are able to recognize their pains, etc. Of course, they are not able to have very sophisticated sort of desires. We can recognize that. We can see that animals only have this very narrow range of desires. We can see that they cannot be able to comprehend this complex set of desires only other human beings can. And this brings difference in our obligations towards human beings and animals. In some cases, our obligations remain the same due हम्म to the same recognition that they both desire to live. But in other cases, we see that there is difference in desire. We can recognize that there is difference in desire, and हम्म that actually amounts to different obligation. हम्म राइट, अमेजिंग अमेजिंग। एंड आई ऑल्सो बिलीव ना कि जैसे वाई आई बिलीव कि देयर इज नो सच थिंग एज एनिमल राइट्स। मैं उसका रीज़न बहुत बेसिकली दे देता हूँ कि आई बिलीव कि इट्स लाइक फॉलोज द सेम फैलेसी विच मूड्स सेड की एनालॉजी काइंड ऑफ थिंग। तो इसको मैं बहुत बेसिक टर्म में समझाता हूँ कि लाइक जस्ट बिलीव कि दैट वी आर लुकिंग ऑन सम एनिमल जिसको मान लो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, ठीक है। अब the similar thing is that we have self reflection, inner reflection, and we can see कि अच्छा we have some similarity because human seen commonality ना कि हमारे में इसके में ये common है, this and that. Now this commonality is something very मतलब on the basis of physical चीज, जैसे कि sentient is very physical thing ना,
तो we can't say कि it's like something very hidden. तो we can see कि there is blood on his leg, और उसका खोपड़ी ऊपरी टूट गया, जो भी है। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कुछ अलग से है कि लाइक बाकी की सारी चीज़ें वो वेग हैं। अभी के लिए सिर्फ हम ऑब्जर्वेबल चीज़ों की बात करेंगे। तो द सेंटिएंट नेचर ऑफ द एनिमल is very observable thing, and it's very common thing because we share the same thing. Now this behavior के बाद जो डिडक्शन होता है, अब यहाँ समझना, डिडक्शन इट्स अ कांडियन मेथड। तो ये लोग क्या कहते हैं कि just because he shares a behavior with us, now he is all the nature which humans entails एक्सक्लूसिवली, क्योंकि अल्टीमेटली वी कैन सेल्फ रिफ्लेक्ट ना, कि हमारे पास कौन सी फैकल्टी है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, हमारे मोरल वर्थ क्या है, वी कैन एक्सप्रेस आवर राइट्स, वी कैन एक्सप्रेस अदर थिंग्स ऑल्सो, ई टी सी टी सी टी सी पी क्यू आर एस वाई टी, जो भी। नाउ आई थिंक कि दिस रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। क्योंकि ये डिडक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ एक, मतलब आई डोंट नो फैलेसी को क्या कहेंगे यहाँ पे, बट एक फैलेसी ये हो रही है कि दैट दिस बिलीफ ऑफ कंपोजिशन कि दिस एनिमल इज आल्सो सेंटिएंट, उसका कंपोजिट मतलब एक कुछ नेचर या पार्ट है, जो भी है उसके, मतलब एक एग्जिस्टेंस का। नाउ देयर हैज़ टू बी दिस मोर कि लाइक उसमें ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, डिग्निटी, इंटेग्रिटी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ होना चाहिए। ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमन, जो तुमने बोला ना, बहुत सही बोला, तो द डिजायर is also observable. So if we start observing animal desires or animal behavior basically, so we can make a set of understanding, and even we can deduce it very simply by every मतलब observation। and यहाँ से हम ये deduce कर सकते हैं कि they don't have any rational faculty। जब हम ये समझ गए, they also don't have any moral nature। like I'm like making the sense now। Yeah, सो मेरे कहने का मतलब है, जैसे बिहेवियरिज्म इज, इफ बिहेवियरिज्म इज ट्रू, ठीक है, इफ बिहेवियरिज्म इज ट्रू, तो हमें कैसे पता कि दैट वी आर द स्पेशल बीइंग्स? बिकॉज वी सिंपली कैन ऑब्जर्व आवर बिहेवियर्स एंड वी कैन देन, आफ्टर ऑब्जर्विंग आवर ऑल बिहेवियर्स, वी कैन मेक अ सेट ऑफ ऑल द बिहेवियर्स, एंड दिस सेट ऑफ ऑल बिहेवियर्स वी कैन डिड्यूस इट कि हमारे पास एक रैशनल लैंग्वेज है और रैशनल एक्सप्रेशन है जो कि हम लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट ये चीज़ एनिमल्स के साथ कभी नहीं हो सकती है, इवन उनके डिज़ायर्स में भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि दे लैक इट। एंड अब यहाँ सबसे मेजर काउंटर ये मेरा है कि जो एनोलॉजी है ना, कि दैट दिस एनोलॉजी ऑफ सेंटिएंट वाला नेचर, कि दैट द सेंटिएंट नेचर ऑफ एनिमल्स इज कॉमन, commonality वाला argument, and just because they are sentient, so they have to do with moral rights, moral autonomy, moral blameworthy, ये वो दुनिया भर का। एंड यहाँ पता है क्या प्रॉब्लम है? इट्स अ रिगरस बेसिकली, क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली ये इसलिए रिग्रेस है क्योंकि वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इन्फिनाइट आर्टिफिशियल थिंग्स जो ऐसे मिमिक कर सकते हैं, अगेन वही जॉम्बीज टाइप। तो दिस इज द प्रॉब्लम, because ultimately don't reflect anything, and I believe कि they don't have any moral nature. yeah, that is true because when we observe the behaviors of animals, we can see that the set of behaviors they actually show it's very different from the set of behaviors human beings show. Their Mm-hmm. behaviors totally lack the use of language. So you won't find like complex language in animals. The animal behavior is very unsophisticated. It is not like polished through the use of language. But in human beings, we can actually recognize that humans have these rational faculties, they can reason, etc. And because of their use of this language, they can use complex language, which have a very proper structure, right? Our language is very structured because we can generate infinite amount of sentences. We just need some words and we just need to know the grammatical form. And by knowing these things, we can generate more and more sentences. And this ability is very, very unique to us. No one has this, like,
ability to communicate like this. And this Yes. is directly observable. This is not some like I'm not like theoretically postulating this thing. This is just what we can observe in animals and human beings. This difference is directly लेकिन observable. लेकिन I don't see कि मतलब how this proves that animals don't have rights. कि मतलब हाँ उनके पास sophisticated language नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऐसे behaviors वो जो है नहीं दिखाते जो humans के पास है. बट इससे ये कहाँ प्रूव होता है कि they don't have rights. सो मैं बताता हूँ, इसका आंसर बहुत इजी है. सो द प्रॉब्लम इज कि लाइक जितने भी मतलब इसका मैं सिंपल काउंटर से ये जवाब दूंगा कि दैट दिस थियोरी की लैंग्वेज इज डिफरेंट देन द रैशनल एक्सप्रेशन. और मतलब क्योंकि हम ये मान रहे हैं ना कि राइट्स, डिग्निटी, ऑटोनॉमी हैज रैशनल लैंग्वेज और रैशनल टर्म्स, दे आर बेसिकली रैशनल टर्म्स. नाउ यहाँ कनेक्टिविटी क्यों है, पहले ये समझो. हमने एक जंप ले लिया. वो जंप ये था कि दैट लैंग्वेज और माइंड ये रैशनल क्रिएचर के हाईली कनेक्टिव सॉलिडिटी, या वो कह लो कि एक यूनिटी है. अब इसको ऐसे समझो कि दैट यू कैन नॉट से कि लाइक एक एनिमल जो कि बिल्कुल डिज़ायर में बिल्कुल एकदम वही एनिमलिस्टिक है, कम्प्लीटली हॉरिबल है और पता नहीं क्या ही क्या कर रहा है, कुछ भी रैशनल नहीं है उसके बिहेवियर में. एंड अगर उसके बिहेवियर में ऐसा है, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल्सो बिहेवियर, सो अगर उसके बिहेवियर में ऐसा है तो वी कैन पॉस्टुलेट, और ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन इसे कहते हैं, कि वी कैन से कि दैट ही हैज नथिंग, हैज नो ब्रेन. मतलब अल्टीमेटली वह सोफिस्टिकेटेड ब्रेन नहीं है जैसा हमारे पास है, रैशनल फैकल्टीज नहीं है. अब राइट्स क्या होते हैं? अब राइट्स को ये मान रहे हैं कि इधर दे आर इंट्रिंसिक, ओके, और दे आर सोशल कंस्ट्रक्शन. अब मान लेते हैं कि यू आर सीइंग द वेरी गुड थिंग कि ओके, तो दे हैव्स टू बी राइट, दे हैज टू बी, मतलब दो तरीके से राइट एक्सप्लेन किया जाता है. इधर वी होल्ड इट एज अ इंटाइटलमेंट, कि प्रांजल बोलेगा कि आई हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अ राइट, ठीक है. और इधर इट्स लाइक अ क्रिएट सोशल ऑब्लिगेशन. बट एनिमल्स वो भी नहीं कर सकते हैं, वो इंटाइटलमेंट भी शो नहीं कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली वही तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिस इज अ फैलेसी. इस एनालॉजी जो है ना कॉमनैलिटी वाली, कि बिकॉज दे शेयर अ सेंटिएंट नेचर विथ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज दे आर सेंटिएंट, इट डज नॉट मीन कि उनके दिमाग में कुछ छुपा है, हिडन एजेंट जिसे कहते हैं. एंड दिस इज प्रॉब्लम ऑफ इंटरनलिज्म, क्योंकि यू आर एज्यूमिंग, और एनी पर्सन हु सपोर्ट्स राइट्स वाला व्यू, ही इज अज्यूमिंग कि देयर इज समथिंग हिडन इन एनिमल नेचर जो राइट्स को प्रोवाइड करता है. अगर ये नहीं मानते हो इंट्रिंसिक नेचर वाला, तो सोशल, नो नो, ऐसा नहीं मानते. हाँ तो सोशल, ऐसा नहीं मानते हैं, सोशल, सिंपल सा. हाँ तो मैं वो, नहीं नहीं, वो भी नहीं मानते हैं. अ, हम सिंपल सी बात यह है कि ह्यूमंस के मतलब ह्यूमंस के पास कुछ बिहेवियर है, राइट. उनके पास सेंटिएंटनेस है, उनके पास कॉन्शियसनेस है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, रैशनल फैकल्टीज हैं, एक्सेट्रा. अब हमें ये देखना है कि उनमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है राइट्स के होने के लिए. कि मतलब एक बीइंग है, उस बीइंग के पास ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे हम कह सकें कि उसके पास सर्टेन राइट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, प्लांट के पास राइट्स नहीं होते हैं, आई थिंक वी ऑल कैन एग्री. तो उसके पास तो प्लांट्स ऐसी कौन सी चीज नहीं है उनके पास जिससे उनके पास राइट्स नहीं है. तो जब हम इस चीज पर सोचते हैं, रिफ्लेक्ट किया जाता है, तो मालूम चलता है कि सेंटिएंटनेस, कॉन्शियसनेस, वो जो पेन, सफरिंग को फील करने की जो क्षमता है, या पेन को फील करने की जो क्षमता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट्स के होने के लिए. अरे तो ये यार, है. तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई चीज छिप छिपी हुई है, नहीं. उनके उनके बिहेवियर्स में वो चीज दिख रही है, सेंटिएंटनेस दिख रही है उनके बिहेवियर, कॉन्शियसनेस दिख रही है. हाँ तो आई काउंटर इट ना कि वी कैन क्रिएट इन्फानाइट डमीज जो सेंटेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं. इट्स अ बेसिकली एपिस्टेमिक प्रॉब्लम. स्टिल इट हाँ, तो डज. उनके पास भी फिर राइट्स होंगे. हाँ अगर कोई बीइंग हाँ हाँ, सेंटिएंटनेस शो कर रहा है तो उसके पास होंगे राइट्स. यस. अब यहीं हम आते हैं फिक्शनल या फिक्शनलिज्म पे, कि दैट देन द पॉइंट इज कि दैट राइट्स आर फिक्शनल बेसिकली. फिक्शनल मतलब नॉट
नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, दे आर एग्जिस्टिंग यूजफुल बट अगेन फिक्शनल, मतलब दे डोंट हैव एनी सर्टेन वेरी स्पेसिफिक मेटाफिजिकल मीनिंग, दे आर जस्ट यूजफुल्स। एंड यहाँ पे सेंस बनाता है, बट देन इट अगेन डिपेंड्स अपॉन नॉर्म्स। यू कैन नॉट से कि दे आर बियॉन्ड नॉर्म्स, you have to say ना कि where they are like producing or coming from, originating from, and if they are norms तो like किसके norms हैं ये? I think rights exist. Fictionalism is false, I अरे think. तो फिर वही सर्कुलैरिटी हो गई, समझो समझो। इफ यू आर सेइंग कि राइट्स सिर्फ सेंटिएंट रिकॉग्निशन में है तो इट्स आर नॉर्म्स, और नॉर्म्स होने के लिए अगेन लैंग्वेज वही सब कहाँ चाहिए। नॉर्म, एक सेकंड, ये नॉर्म्स, ये नॉर्म कैसे होगा कि मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि सेंटिएंट वो राइट्स जो है वो सेंटिएंटनेस में है, तो ये सिर्फ एक सोशल नॉर्म है, मतलब हाउ? नॉर्म्स मतलब जैसे एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं ना कि दैट दो व्यूज हैं बेसिकली। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है कि लाइक वी कैन क्रिएट मतलब थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, आवर यूजफुलनेस। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ दे आर नॉट इम्प्लिसिट, जो तुमने ही बोला, तो दे आर फिक्शनल्स, एंड इफ दे आर नहीं, फिक्शन इम्प्लिसिट तो है। मैंने कहा राइट्स इम्प्लिसिट हैं, लेकिन वो देन सेंटिएंटनेस में है, देन कि हिडन, कोई बीइंग सेंटिएंट है नहीं इस चीज में है। नहीं तो फिर अगेन हिडन एजेंट वाली बात आ गई ना कि दे आर दिस राइट्स आर हिडन समवेयर। एक्सप्रेस कौन कर रहा है? नहीं, नहीं, ये नहीं कैसे कर हो पा गया? रहा है। सेंटिएंट देखो, समझो समझो, इफ द सेंटिएंट होना इज राइट, अगर ये कह रहे हो तो भी ये आइडेंटिकल प्रॉब्लम को नहीं, लेकर है। हाँ तो क्या है फिर? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर किसी बीइंग के पास सेंटिएंटनेस है, देन उसके पास राइट्स भी हैं। अब इसमें मेरे को इस समझ में आ रहा है कि तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये तो सोशल नॉर्म है, या जो भी चीजें तुम कह रहे हो। मतलब मेरा सिंपल सा क्लेम है कि सेंटिएंटनेस के होने से राइट्स आते हैं किसी भी बीइंग के पास। अब इससे कोई और चीज जो तुम कह रहे हो वो कैसे इम्प्लाई हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। राइट्स, राइट से क्या समझते हो? एक ही राइट मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। यही एकमात्र ऐसा राइट है जो जानवर के लिए भी बोला जा सकता है कि हाँ भाई वो नहीं, प्रिजर्व करना। राइट टू लाइफ होता है, नहीं नहीं, बॉडीली नहीं ऑटोनोमी नहीं, होता है, ये रिड्यूसिबल सब है, सब चीजें। सब रिड्यूसिबल है। वो सब ठीक है, मतलब यू कैन से कि राइट टू एजुकेशन भी होता है एनिमल्स के लिए, कि दे कैन एजुकेट देमसेल्फ इन सम बिहेवियर, जैसे उन्हें ट्रेन कर दिया गया, वो भी हो सकता है। बट बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे दे हैव जस्ट राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन अल्टीमेटली, मतलब ऑल थिंग्स आर रिड्यूसिबल। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि दिस राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन मेक सेंस, ठीक है, इट हैज़ नो प्रॉब्लम। बट राइट्स जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं होते हैं, दे आर नॉट सम लाइक डमीज। इसको ध्यान समझना, राइट्स हैव ऑल्सो ऑब्लिगेशन, ये मतलब ये रैशनल्स में भी समझ रहा है, मे बी आई मेक सेंस ना कि लाइक ऑब्लिगेशन ऑल्सो, अथॉरिटी का होना ज़रूरी है राइट्स के लिए, रिकॉग्निशन का होना ज़रूरी है राइट्स के लिए, ये सब ज़रूरी है। अगर तुम सिर्फ ये कह दो कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन करो कि सेंटिएंटनेस ने मतलब जो भी है, नेस इंक्लूड्स राइट्स, तो ये राइट ऐड क्या कर रहा है? लाइक ऐड क्या कर रहा है, समझ रहे हो ना मेरी मतलब कि व्हाट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस राइट, ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है? अब तुम ये कहोगे कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, लाइफ, ठीक है यही बोलोगे, सेल्फ प्रिजर्वेशन, लाइफ, हम्म। ठीक है। देन अगेन द प्रॉब्लम इज कि then चलो राइट ही हटा देते हैं, जस्ट से दे हैव सेल्फ प्रिजर्वेशन, डिजायर टू सेल्फ प्रिजर्वेशन और डिजायर टू लाइफ, ये तो कह सकते हैं बिकॉज अगेन वी कैन चेंज इट, रिप्लेस इट, सिंपल हम्म। मतलब लॉजिकल रूल्स, ठीक है। देन देर इज नो ऑब्लिगेशन, क्योंकि ऑब्लिगेशन अपॉन whom? मतलब ऑब्लिगेशन अपॉन अस कि दे Why? मतलब उनको कंसीडर करें कि दे हैव दिस राइट्स, क्योंकि Why? हाँ तो उसका रीज़न ये है कि मैंने क्या बोला था, राइट्स जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं ना, अगर उसको रैशनल टर्म में समझोगे तो दे आर नॉट समथिंग लाइक प्रॉपर्टी और यूनिवर्सल्स, ठीक है। तो सेंटिएंटलिज्म या जो भी नेस है हैज़ नथिंग टू डू विथ यूनिवर्सल्स,
मतलब प्रॉपर्टी की तरह मत यूज़ करो, प्रेडिकेट की तरह मत यूज़ करो। राइट्स आर नॉट प्रेडिकेट्स। तो राइट्स जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, दे आर ऑब्लिगेशन, अथॉरिटी और रिकॉग्निशन एंड ऑल। तो बेसिकली राइट्स है, मतलब दिस वर्ड राइट डज नॉट इंक्लूड और एड एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग इनटू द लैंग्वेज ऑफ मोरल डिस्कोर्स विथ दिस, मतलब मोरल रिकॉग्निशन ऑफ एनिमल्स और जो भी है उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर जस्ट स्टेटिंग द बेसिक नेचुरल फैक्ट्स कि दे हैव डिजायर टू लिव, दे हैव डिजायर टू प्रिजर्व देमसेल्व्स। समझ रहे हो मतलब मेरा? क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द सेम, मतलब इक्विवेलेंट टर्म्स। कि लाइक एक तरफ लिखो कि डिजायर टू लिव इक्वल टू राइट टू डिजायर, मतलब सॉरी राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन एनिमल्स के लिए। तो राइट कुछ ऐड ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे टर्म में क्या होता है, मोरल, हमारे मोरल लैंग्वेज में राइट ऐड करते हैं ऑब्लिगेशंस, रिकॉग्निशन के सामने वाला समझे। और ये बात रैशनल बार बार बोल रहा था कि भाई राइट्स का मतलब ही क्या है, इफ नो बडी कैन रिकॉग्नाइज इट, इवन यू कांट इवन रिकॉग्नाइज इट। इसीलिए देखोगे कि राइट टू एजुकेशन मेक सेंस बिकॉज स्टेट हैज अ, मतलब अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्लिगेशन और ऑल्सो दिस रिकॉग्निशन कि हाँ ठीक है। तो इससे अगर हम ये कहते हैं कि एनिमल्स हैज राइट टू लाइफ, तो इससे ये होगा ना कि मतलब ह्यूमंस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हम उन्हें ना मारें। हम जो है उनके इस राइट का, राइट टू लाइफ जो उनके पास है, इसको हम सम्मान दें। राइट। ऑफ कोर्स, मतलब ये तो आई कैन अलाउ इट, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो देन इट्स अ नॉर्म, लाइक इट्स अ ह्यूमन नॉर्म कि नॉर्म कहाँ है? अरे बाबा समझो समझो, नॉर्म इसलिए है कि लाइक राइट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एक्सप्रेशंस। सो हमें ये समझ में आ रहा है कि एनिमल्स तो कुछ एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, तो अगेन वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट। समझना, राइट्स के लिए दोनों के रिकॉग्निशन की और वैलिडेशन की ज़रूरत है, मतलब दे हैज़ टू बी दे टू मोरल सब्जेक्ट्स, टू मोरल सब्जेक्ट्स। बट हियर वी कैन सी कि देयर इज ओनली वन मोरल सब्जेक्ट, मतलब वन साइडेड रिकॉग्निशन है। नाउ दिस वन साइडेड रिकॉग्निशन डज नॉट नो कि उनकी मोरल लैंग्वेज क्या है, मोरल वर्थ क्या है, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सेस इन टू देयर ब्रेन्स ना। दिस इज द प्रॉब्लम, वी कैन नॉट एक्सेस इन टू द एनिमल नहीं, बिहेवियर और वी राइट्स। डोंट नीड टू। हाँ तो वी डोंट नीड टू कि मतलब यस उनके ब्रेन को एक्सेस करना कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये कहने के लिए कि यस उनके पास मोरल वर्थ है या मोरल यस वैल्यू। यस यस, तो दे आर इरेशनल, ऑल्सो इमोरल, वो मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करी, वो है ह्यूमन रिकॉग्निशन टू द एनिमल्स, मतलब आवर रिकॉग्नाइजिंग पावर कि हाँ उनमें एक सेंटिएंट नेचर है, बस यही एक रिलेशन है, सिर्फ वन सिंगल रिलेशन। अब ये मतलब ये तो क्लियर होगा ना कि देयर इज ओनली वन सिंगल रिलेशन। हेलो। हेलो। हाँ तो मैं ये रैशनल रिज्म कुछ बोलेगा इस पर? So see, the idea behind obligations is that it is basically telling us what to do. So if you just cite like natural facts, if I say that this is causing suffering to an animal, or this is just, if I like just give you the list of what is actually happening, that on its own doesn't tell you what to do. What to do actually gives you the recognition of what is actually right and wrong. And for that to recognize that, you have to be on like this self-reflective position where you judge which principles to act upon. And and there the principles must apply to rational agents, right? It's about rational agents, what rational agents have to do, because animals cannot reflect upon their actions. Only we are in this situation where we ask ourselves what to do. Animals just act on their desire. So our animal just do what it is like feeling to do. But human beings, they have this power to recognize, to ask themselves, why should I act upon my desire? Why should I even follow my desire? Should I follow my desire? So should I do anything else? Why anything? That question we can ask ourselves. And that requires an answer. And that answer is what actually grounds obligation, right? Ultimately, what will ground obligation will be the moral.
be the correct answer in this self-reflective position. And according to a Kantian, the answer will be the principle of universalizability, where we recognize that the principle must be applicable on every rational being. Everyone must reasonably accept this principle which we are acting upon. It cannot be like objected by a reasonable person. If some rational agent can object to our principle, then that cannot be the right principle to act upon. Hmm. So the thing is that obligations, only human beings can have obligations because we are rational agents. Animals cannot have obligations. They cannot be obligated to do something. And the importance of that thing is that only we are able to recognize we are able to recognize the rights of animals and the rights of human beings. And we'll find that there are obvious differences between them. One thing is that due to humans, we are able to entertain many things. And by entertaining, I mean they are able to have these desires, very sophisticated desires, which animals cannot entertain. And Yes. that creates a difference in how we treat them. Hmm. Because they are not able to have this desire, there is no like question about violating their desires. But there is this question about violating the desires of human beings. And see, the point is that as rational agents, because no one can reasonably, we have to act on principle that no rational agent can reasonably reject. We have to respect the considerations that other rational agents have. We cannot like disregard their interest. Hmm. Because once we disregard their interest, we are actually, then our principle can be like reasonably rejected. It is not universal because we are arbitrarily disregarding someone's interest. Hmm. Great. Great point. यही यही मैं भी कह रहा था कि देखो, इट इज़ नथिंग कि अगर हम ये कह दें कि द होल मोरल डिस्कोर्स इज anthropomorphic, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाई एनिमल्स कांट हैव राइट्स, रीजन सिंपल है कि लाइक अगर हम ये भी कहें कि दैट ह्यूमंस हैज ऑब्लिगेशन नॉट टू किल एन एनिमल, then it again applies from the anthropomorphic view that humans has obligation. Again, point the word, the first sentence कि humans has. Now the human, यहाँ जो सब्जेक्ट ह्यूमन है, मतलब इन दिस सेंटेंस, तो दिस सब्जेक्ट हैज एन इम्प्लिसिट रैशनैलिटी, और ये एनिमल्स में नहीं हो सकते। तो हमेशा जो एनिमल्स होंगे ना वो ऑब्जेक्ट होंगे, सिर्फ सेंटेंस में ही नहीं, मतलब स्टेटमेंट बोल रहे हो तो सिर्फ दे आर नॉट ऑब्जेक्ट इन दैट, मतलब वो उसमें, बट ऑल्सो दे आर ऑब्जेक्ट टू आवर मोरल प्रैक्टिसेस, लाइक वी कैन प्रैक्टिस मोरालिटी ऑन देम, लाइक हाँ उन्हें मानना नहीं है। सेम विथ, अब जैसे मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि आई नो कि दैट आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू बर्न अ हाउस, ठीक है, इट्स वेरी रॉन्ग टू बर्न अ हाउस रैंडमली, जस्ट जला दिया आर्बिट्ररी। ये सिर्फ हमारी रैशनैलिटी दिखा रहा है, इट्स नॉट शोइंग कि होम्स के पास या घरों के पास या लकड़ी या गाड़ी के पास या साइकिल के पास किसी तरीके की राइट है, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट आउटरेजिंग अगेंस्ट दैम और बर्निंग दैम और किलिंग और डिस्ट्रॉइंग दैम। तो पॉइंट ये है कि दैट दिस लैंग्वेज ऑफ नॉट डूइंग दिस एंड दैट इज बेसिकली कमिंग आउट ऑफ आवर सोर्स। और ये मज़ेदार है कि दैट इवन एनिमल्स डोंट हैव एनी सोर्स वुड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या सोर्स वुड है? सोर्स वुड होने के लिए ऐसा नहीं कि सोर्स वुड इज समथिंग आई कैन सी कि रैशनल का सोर्स वुड मेरे हाथ पे नहीं। सोर्स वुड इज अ पॉस्टुलेशन। आई कैन पॉस्टुलेट कि आई हैव अ सोर्स वुड। सोर्स वुड मतलब कि दिस सोर्स ऑफ रीजन, फ्री विल, एजेंसी, ऑटोनॉमी, राइट्स, दिस एंड दैट blah blah। बट एनिमल्स के पास वो भी नहीं है कि देर इज नो सेट, बेसिकली देर इज नो सेट ऑफ सोर्स वुड कि लाइक सारे एट्रीब्यूट्स एक सोर्स वुड में है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम कि जब भी हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे, मोरल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हम अगेन लाइक ह्यूमन या एंथ्रोमॉर्फिक, बेसिकली उसी उसी डायनामिक्स में या डायमेंशन में ही बात कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बताया ना, दो तीन ऑब्जेक्शन दिए ना कि जैसे कि लैंग्वेज में राइट्स डज नॉट ऐड एनीथिंग, अगर हम एनिमल्स के बारे में कोई भी राइट्स की बात करें तो इट डज नॉट एनीथिंग।
अगेन मैंने ब्लैक बॉक्स और हिडन एजेंट की बात की कि दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर अल्टीमेटली साइंस को भी देखो, जैसे बिहेवियरिज्म हो गया या विटगेस्टीन का जो ऑब्जेक्शन है, या इंटरनलिस्टों की जो अगेंस्ट ऑब्जेक्शन है कि देयर इज समथिंग इंटरनल एजेंट हिडन इनसाइड ऑफ अस, इन सब अगर केसेस को ध्यान से देखो तो राइट्स का कोई सेंस ही नहीं बनता, एनिमल राइट्स का स्पेशली, क्योंकि राइट्स होने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती हैं। फिर तुम ये कहोगे कि ये तो एसेंस है, एसेंस मतलब कि सेंटिज्म इज इक्वल टू दिस राइट ऑफ समथिंग, बट इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि आई कैन सी सेंटिज्म, आई कैन ऑब्जर्व पॉस्टुलेट सेंटिज्म, इट डज नॉट एड एनी राइट, क्योंकि राइट मतलब वी होल्ड द राइट्स, ह्यूमंस होल्ड द राइट्स, एंड इट अगेंस्ट लीड टू रिग्रेस ऑफ व्हाट, इनएक्सेसिबिलिटी। अगर हम ये मान लें कि देयर समथिंग एनिमल्स हैज, तो ये इट विल लीड अस टू ट्रीट देम एज एंथ्रोमॉर्फिक एजेंट्स, कि दे आल्सो हैव दिस मोरल डिस्कोर्स, मोरल अंडरस्टैंडिंग, ब्ला ब्ला। ये होता है, कई लोग कर देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम करोगे, बट हैं लोग, ऐसे लोग हैं जो सच में दे लिटरली बिलीव इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस, वाई दिस इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज देर इज इन एक्सेसिबिलिटी, बट आई डोंट बिलीव इन दिस इन एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो। इसको मैं ऐसे रिफ्यूट करूंगा कि दैट आई कैन ऑब्जर्व एन ऑल द बिहेवियर्स ऑफ एनिमल, आई कैन मेक अ सेट एंड आई कैन पॉस्टुलेट, हेंस theory is कि animals don't have anything, मतलब any right। तो inaccessibility भी नहीं है कि that I cannot observe them। inaccessibility मतलब ये है कि जैसे वो लोग होते थे ना कि लाइक आत्मा को तुम इन मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, वो तो कुछ है गूफी गूफी सा। तो सर दे सेम प्रॉब्लम इज विथ एनिमल्स, कि इफ दे हैव राइट्स तो व्हाट इज राइट, एंड व्हाट डज इट इवन मीन कि व्हाट इज एनिमल राइट, लाइक ये टर्म जो है एनिमल राइट, ये क्या मतलब रखता है। एंड इट अगेन लीड अस टू द सेम anthropomorphic एजेंट, कि हम हर चीज़ इंसान के हिसाब से समझाएंगे, क्योंकि डिग्निटी हमारे पास है तो जानवरों के पास भी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी हमारे पास है तो जानवरों के पास भी होनी चाहिए, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। बट क्या इंडिपेंडेंटली हम समझा सकते हैं राइट्स को, जैसे हम इंसानों। एनीवन कैन स्पीक, एनीबडी रैशनल भी बोल सकता है, ही कैन ऐड अ लॉट। तो बस इतना ही था क्या? नहीं बोल सकते हो, ऐड कर सकते हो। हाँ, तो मेरा यही है कि मतलब, हाँ चलो, मान लिया कि जो राइट्स की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल सपोज अ बीइंग हैज राइट टू लाइफ, है ना? तो उस राइट को वायलेट ना करने की जो ऑब्लिगेशन होगी वो रैशनल बीइंग्स पर होगी, एक शेर पर नहीं होगी। हम एक शेर को नहीं कहेंगे कि तू हे हिरन को मत मार, क्योंकि मतलब उसके पास क्योंकि वो रैशनल बीइंग ही नहीं है, वो एक रैशनल एजेंट ही नहीं है। हम ह्यूमंस को कहेंगे कि यू शुड नॉट किल डियर्स बिकॉज ह्यूमंस आर रैशनल एजेंट्स। बट आई डोंट थिंक कि मतलब इसे दिखाने से ये प्रूव हो जाता है कि एनिमल्स के पास राइट्स ही नहीं है। और हाँ मतलब कि ह्यूमंस रैशनल एजेंट्स हैं, बट सपोज कोई एलियंस है, मतलब कोई एलियन है जो रैशनल है, तो उसके ऊपर भी वो ऑब्लिगेशन होगी। ये ऑब्लिगेशन हर एक रैशनल बीइंग पर होगी, सिर्फ ह्यूमंस पर ही नहीं होगी। अगर यूनिवर्स में कोई दूसरा भी रैश बीइंग है, उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन होगी, तुम्हें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। तो ये दिखा देने से कि ऑब्लिगेशन सिर्फ रैशनल बीइंग के ऊपर होगी, मेरे को नहीं लगता कि ये साबित हो जाता है कि एनिमल्स के पास राइट्स नहीं है। अरे यार वही तो मिस्टेक कर रहे हो, यू आर लिटरली प्रिज्यूमिंग कि, पहली बात तो यू आर लिटरली प्रिज्यूमिंग कि राइट्स होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकंड थिंग इज, इवन इफ लाइक ग्रांट्स राइट्स, देन दे आर बिकम सब्जेक्ट, ठीक है, मोरल सब्जेक्ट्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इट डज नॉट मेक सेंस, वही बात है ना। तो वही तो हम लोग कह रहे हैं कि द पॉइंट इज वेन एवर यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनिमल राइट्स, अल्टीमेटली इट्स अ फेलियर, लाइक इट्स अ फेल्ड प्रोजेक्ट, सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है ना कि लाइक सब्जेक्ट एनिमल हो नहीं सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एसेंस क्या है उसका, ये जो जो भी हम बात कर रहे हैं राइट की,
ये तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. इट कैन नॉट बी लाइक आवर फीलिंग अबाउट कि जस्ट बिकॉज वी होल्ड्स राइट्स एनिमल शुड आल्सो हैव्स टू होल्ड राइट्स. और या जैसा हम समझते हैं इंटरनली अपने हेड के अंदर, बट ऐसा नहीं होता है. राइट्स हैज टू बी समथिंग. समझ रहे हो मतलब, इट इज़ नॉट समथिंग इम्प्लिसिट कि हाँ ठीक है राइट्स होते हैं. ऐसा नहीं होता. सीरियसली स्पीकिंग, वी कैन एक्सप्लेन राइट्स. एंड दिस इज द important factor. If we see the necessary and sufficient condition for rights, एनिमल्स के पास वो कुछ नहीं है. मतलब हु इज एंटाइटल्ड विथ राइट, ये असली क्वेश्चन होना चाहिए. कि ओनली द रैशनल बींग्स और नॉन रैशनल बींग्स ऑल्सो. एंड इसमें मजेदार बात यह है कि रैशनल बींग्स ही हो सकते हैं. ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई पावर कैपेसिटी होल्ड करते हैं, नहीं. ये इसलिए है क्योंकि राइट्स का मतलब ही एक्सप्रेशन है. एंड जो लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, अब जैसे मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया था, मैं इन्फानाइट एग्जांपल्स दे सकता हूँ सेम आर्गुमेंट्स पे, सेम स्ट्रक्चर पे. कि लाइक आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू हर्ट अ ट्री और अ बुक और अ चेयर, बट इट डज नॉट मीन कि दे हैव राइट्स. समझ रहे हो. अब तुम ये कहोगे सेंटिएंट वाला, तो मैंने वो पहले ही बताया कि इट डज नॉट ऐड एनीथिंग. सेंटिएंट होने का क्या मतलब है. लाइक इट डज नॉट मीन एनीथिंग, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि हाँ उन्हें पेन हो रहा है, वो हो रहा है बस. एक्सप्रेशन तो कुछ है नहीं. अब ये भी कह रहे हैं कि दे हैव एक्सप्रेशन, लाइक डिजायर टू लाइव, तो आई कैन सी कि राइट हटा दो फिर शब्द से, क्योंकि राइट एड ऑब्लिगेशन. मीनवाइल डिजायर ऑफ लाइफ इज समथिंग वेरी ऑप्शनल. कि लाइक यू कैन डिजायर डेथ, समटाइम्स पीपल डिजायर डेथ, बट इट डज नॉट मीन कि ऑब्लिगेशन है कि मार डालो साले को. होता है. अब सोचो कितना इंटरेस्टिंग है. हो सकता है एनिमल्स में होता हो, किसे पता है. बट बात वही है ना कि अगर किसी को पता ही नहीं है तो इट इज़ नॉनसेंस बेसिकली. लाइक इफ वी कैन नॉट थिंक about something very rationally, then it is nonsense. It's just a hoax or kind of uh, मतलब hypothetical situations, and we can create a lot of hypothetical situation where we can put a lot of sentiments with subjects, objects, and their relations, and also lot of मतलब एक इसको शायद ये विलियमसन यूज अ वर्ड morally loaded question in epistemology. या सो वही बात है कि दैट वी कैन लोड अ लॉट ऑफ मोरालिटी की. अरे जानवर को मारना तो गलत है. अगर तुम राइट्स को नहीं मानोगे तो मतलब तुम जानवर को, ये भी कई लोग करते हैं आर्गुमेंट कि मार रहे हो. नहीं, ज़रूरी नहीं है. आई कैन लाइक नॉट टू किल एन एनिमल बिकॉज आई एम अ रैशनल बीइंग, बट इट डज नॉट मीन कि दे हैव एनी राइट. नो. समझ रहे हो मतलब, जो राइट का पूरा लिंग्विस्टिक है वो बहुत डिफरेंट है जो तुम यूज़ कर रहे हो उससे. एंड अगर कोई भी वीगन ये यूज़ कर रहा है तो भी प्रॉब्लम मैंने बता दी कि लाइक इट डज नॉट ऐड एनीथिंग, लिटरली इट डज नॉट ऐड एनीथिंग इन डिस्कोर्स. हेलो रैशनल. इंटरेस्टिंग. सही है, थोड़ा सा सोचना होगा इस हेलो. चीज के ऊपर मेरे को. बट हाँ. अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मैं कन्विंस नहीं हूँ इस चीज से. लेकिन हाँ, सोचना होगा थोड़ा सा बस. जैसे बर्डन भी हमारे पे नहीं है ना, अगर सीरियसली देखा जाए तो यू नो So द. the idea is this. हम्म. बोलो बोलो. स्पीक. So see, if I suppose there is a forest or some grass area and I go and occupy. So this, there is nothing like क्या? objectionable about it because see the plants there, there will be a lot of plants there, like plants and trees. And if I cut them, I'm not doing anything wrong. I'm not violating any right because there is no like conflict that can arise for me. There's nothing about the. I don't need to justify myself to those plants or animals because they cannot recognize anything. They're unable to recognize anything at all. They're totally like non-sentient, right? They're like they don't have any kind of consciousness. They cannot object.
And that is important because the nature of rights has something to do with how we can like justify our action to other agents, because our actions can be like our actions can be questioned on like rational grounds, and our obligation arises because some of these objections will be legitimate. Sometimes there will be legitimate worries about our actions, and then those can be raised by only by other rational agents. For example, plants cannot raise those questions. But if I attack a human being and try to occupy his place, then there is like a reasonable conflict where he can like reasonably object to my action, and his objection will be reasonable, because if I'm initiating violence against him, if I am the one initiating violence against him, then that is his like reasonable objection. Because that is not something, I'm not doing something irrational because I'm not respecting his rights. But in this like a rational agent recognizes that he has to respect the desires of other agents. And the reason is, one reason is that only other agents can object to what you are doing. They have that entitlement, right? They are entitled to object. But in cases where there is no case of conflict, no possible case of conflict to object, you don't like owe an explanation to someone that cannot like ask for an explanation. You owe an explanation only to someone that can like reasonably raise that body. मतलब are you done? Yeah, ग्रेट। इसमें भी पता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दैट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी फॉर अ आइसोलेटेड थिंकर और subject who can think upon his own action, because Kantians are like mostly individualist. तो we can think upon our own actions कि अच्छा ठीक है गलत है। of course we are not owing any obligations, but एक मज़ेदार चीज़ ये है कि that I what I believe is ना कि that rights are uh, like literal expression। लाइक अगर एक सिंगल पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जिंदा है जो कि लाइक रैशनल है बेसिकली, तो हमेशा मतलब एक नेसेसिटी है या एसेंस है कह लो कि दैट ही विल एक्सप्रेस इट। एंड यहाँ सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि दैट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाई ही ओन्स प्रॉपर्टी एंड ही हैज़ टू ओन प्रॉपर्टी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको ऐसे समझो लाइक मतलब इंसान पैदा होता है वी ऑल नो, ठीक है। अब अगर हम एक ओरिजिनल स्टेट भी मान लेते हैं तो भी इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक कि ही विल नॉट गो फॉर प्रॉपर्टी, ही विल गो फॉर प्रॉपर्टी, ही विल गो फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। बेसिकली अगर हम फूड और वाटर को भी मान रहे देन स्टिल ही विल कंसीडर देम एज लाइक हाँ ही काइंड ऑफ ओज मतलब ओन देम। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि ये they are the part of they are part of our and nature or essence जो भी। so this is very essential। अरे हाँ यार इसका एग्जाम है, जाओ जाओ। so they are very essential। तुम एनिमल राइट्स पे मानते थे रैशनल? हेलो रैशनल।
चलो अच्छा ठीक ही है। हम करते हैं। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ। वेट, ठीक है लीव कर दूँ, मैं बंद कर दे रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे।